Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Candramauli Swami Guru Maharaj, Candramauli Swami Guru Maharaj. Jaya Candramauli Swami Guru Maharaj, Candramauli Swami Guru Maharaj. Swami Nityananda Krishna Krishna Srimad Chandra Swami Nityananda Krishna Krishna Srimad Bhakti Vedanta Swami Nityananda Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadini Nirvishesha Shunnavadi Pachato Deshwatarine Namaste Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Advaita Gadadhara Shivashari Prabhu Bhakta Govinda Jaya Shri Krishna Krishna
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Jaya Gurudeva, Gurudeva. Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Prabhupada. गौर प्रेमानंदी जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज आविर्भाव तिथि महोत्सव की श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जय विष्णुपाद परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की गुरु परंपरा आचार्य बिंद की अनंत कोटि गौर भक्त बिंद की समवेत गौर भक्त बिंद की गौर प्रेमानंदे all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Gauranga, all glories to Srila Prabhupada. हरे कृष्णा। सही भक्तों से निवेदन है कृपया बैठ जाइए। So it is our great good fortune that today we are celebrating the 76th Vyas Puja of His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj. His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj ki, His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj Vyas Puja Maha Mahotsav ki, Srila Prabhupada ki. So now we will hear from His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj. Hare Krishna. Om Agyan Timidandasya Gyanarjana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Staptitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadammayam Dadati Swa Padantikam Bandeham Shiguro Shiyuta Bhasi Kamalam Shigurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raganatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Sarvadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Sihalalita Shri Vishakam Vitamscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Brindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhischa Kripa Sindhu Paebacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namaho Namaha Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasnaya Bhutale Shrimakti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pacharine Nirvisesa Sunyavadhi Paschatya De Sutarine Srila Prabhupada Ki Jai. Om Gyan Timidandasya Gyanajana Salakaya Chaksu Unmilitam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha. This material world is known as a place of Tama, darkness. तमा या अंधकार, ये भौतिक जगत अंधकार का स्थान माना जाता है. Darkness because people do not know, or this world teaches who you are not rather than who you are. तो अंधकार का स्थान इसलिए माना जाता है क्योंकि इस जगत में ये सिखाते हैं जो आप नहीं हो, बजाय ये सिखाने कि आप क्या हो. So everyone in this world is born in ignorance. तो इस जगत में सभी अज्ञान के अंधकार में जन्म लिए हैं. And the whole world teaches that you are this body, and the activities of the body, the mind, the senses, the intelligence, are actually the activities that you need to perform in order to become happy in this world. तो ये पूरा संसार ये सिखाता है कि आप ये शरीर हैं और इस शरीर में मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये जो कार्य हैं, ये सभी कार्य आपको करने की आवश्यकता है और इनके माध्यम से ही आप इस संसार में सुखी रह पाओगे. Chaksudan diloye janmi janmi Prabhu say. So the business is to wake up. Jeep jago, Gauda Chanda Bole, Gota Nidra, Jayo Maya, Pisa Chita Kole. This is a place of darkness where everyone is in ignorance. तो हमारा कार्य है इस अवस्था से जागना. चैतन्य महाप्रभु इस अवस्था से जगाने के लिए आते हैं और यहाँ पे सभी अज्ञान के अंधकार में सोए हुए हैं. No one knows who they are, and no one knows what is the purpose of their existence. कोई ये नहीं जानता कि वे कौन हैं या उनके अस्तित्व का उद्देश्य क्या है. So it is the business of the spiritual master who represents the Supreme Lord. The Supreme Lord wants everyone, all living entities, to come back to him in the spiritual world, in loving devotional service. आध्यात्मिक गुरु जो हैं वे भगवान के प्रतिनिधि हैं और वे जीव को जगाने का कार्य करते हैं क्योंकि भगवान ये चाहते हैं कि सारे जीव उनके पास भगवत धाम में आ जाएं और वहाँ दिव्य प्रेममयी सेवा में युक्त हों. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna himself, presents himself as a representative of himself in the form of his spiritual master. जो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं वे अपने आप को प्रस्तुत करते हैं स्वयं को गुरुदेव के रूप में जब हमारे समक्ष प्रकट होते हैं. In order to wake us up, to teach us who we really are and how to find real happiness and success. और उनका उद्देश्य है हमें जागृत करना, हमें ये बताना कि हम वास्तव में कौन हैं और हम कैसे सफलता वास्तविक प्राप्त कर सकते हैं. The spiritual master acts only on behalf of the Lord. आध्यात्मिक गुरु केवल और केवल भगवान के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं. A spiritual master is not one that creates some new ideas. आध्यात्मिक गुरु ऐसे नहीं कोई नई विचारधारा को जन्म देंगे. Whatever he speaks based on what Krishna has said. जो भी वो बोलते हैं वो कृष्ण ने जो कहा है उसी के आधार पे बोलते हैं. But what his spiritual master has said, which is also what Krishna has said. या फिर वो बोलते हैं जो उनके गुरु ने कहा है और उनके गुरु ने भी कृष्ण की बातों को ही दोहराते हैं. That is a spiritual master. He doesn't add anything. He doesn't take anything away. He doesn't create his own ideas of what is spiritual life, of who is God. यही आध्यात्मिक गुरु की पहचान है. वो कोई जोड़ते तोड़ते नहीं हैं, नहीं कोई अपनी नई विचारधारा बनाते हैं कि भगवान ये है, भगवान वो है. Nor does he think that he's God.
ना वो ये सोचते हैं खुद कि मैं ही भगवान हूँ। But the spiritual master is seen in that same way as being the representative of God. So as God is not personally present, the spiritual master accepts worship on behalf of the Lord from his followers. लेकिन आध्यात्मिक गुरु को भगवान के प्रतिनिधि के रूप में ही देखा जाता है, और चूंकि भगवान हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं दिखते हैं, इसलिए आध्यात्मिक गुरु भगवान के प्रतिनिधि के रूप में अपने शिष्यों से सेवा या पूजा स्वीकार करते हैं। He is called transparent via media, which means he is a medium by which we connect to the Supreme Personality of Godhead. गुरु को एक पारदर्शी माध्यम कहा जाता है क्योंकि उनके माध्यम से हम भगवान से जुड़ते हैं। He's not trying to connect anyone to himself, but using himself as the representative of the Lord, he accepts service on behalf of the Lord and offers it to the Lord for the benefit of those who take shelter of his instructions. गुरु कभी भी भगवान अपने को घोषित नहीं करते हैं, लेकिन वो भगवान के प्रतिनिधि के रूप में सेवाएं स्वीकार करते हैं और उस सेवा या पूजा को भगवान को ही अर्पित करते हैं ताकि जो पूजा करने वाले हैं शिष्य, उनका लाभ हो। Nowadays it's very fashionable that people take the position or claim the position of being guru. आजकल तो ये एक फैशन बन गया है कि लोग गुरु की स्थिति ले लेते हैं या खुद गुरु होने का दावा करते हैं। So many gurus. बहुत सारे गुरु, But guru is actually one. There's only one guru. लेकिन वास्तव में गुरु एक ही है। Just as God is one, guru is also one. जैसे भगवान एक हैं, गुरु भी एक हैं। That means he represents that one Supreme Personality of Godhead. Therefore, he is qualified to be called guru. इसका कहने का मतलब ये है कि वो जो गुरु हैं वो सभी एक भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसी कारण उन्हें गुरु माना जा सकता है। He doesn't come here to give you some medicine so you can cure your back pain. गुरु इसलिए नहीं आते हैं हमारे बीच कि हमें कोई दवा देंगे जिससे हमारा पीठ का दर्द ठीक हो जाएगा, Or to improve your material life. या आपके भौतिक जीवन में सुधार आएगा। People come to guru for different reasons. गुरु के पास लोग अलग अलग कारणों से जाते हैं, But there is only one reason to approach the spiritual master. लेकिन आध्यात्मिक गुरु के पास जाने का एक ही कारण होना चाहिए। I want to know what is the goal of life and how to achieve it. मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीवन का लक्ष्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त करना है। That is, otherwise, why approach a spiritual master for another reason? वरना किसी और कारण से गुरु के पास क्यों जाना? You're simply wasting his time and your own time. ये तो फिर गुरु का समय नष्ट करना है और खुद का भी समय नष्ट करना। So a bona fide spiritual master is simply giving us what Krishna wants us to have, and that is devotion to Krishna. तो प्रामाणिक गुरु हमें वही प्रदान करते हैं जो कृष्ण चाहते हैं कि हमें प्रदान किया जाए, और वो कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्तिमय सेवा। And how to approach a guru? और गुरु के पास कैसे जाया जाए? Tattvadarshanaha. In that verse, the Supreme Lord speaks three principles on how one should approach a spiritual master. तो भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान तीन सिद्धांत बताते हैं कि किस प्रकार से गुरुदेव के पास जाना चाहिए। Praripasyena means submissively, with a desire to understand. Pratipatena means to Praripasyena means to acquire, and sevaya means ready to offer seva, service. परिप्रश्न मतलब विनम्र भाव से जिज्ञासा करने की इच्छा, और प्रणिपातेन मतलब उनके प्रति शरणागत होना, और सेवाया मतलब सेवा करने के भाव। Then the spiritual master is inclined or even happy, inspired to give everything that he can to that disciple, which will help them understand who they are, what is the goal of life, how to achieve that goal. तब आध्यात्मिक गुरु उस शिष्य के प्रति कृपालु होते हैं और उसे ये ज्ञान प्रदान करते हैं कि वो कौन है, उसका लक्ष्य क्या है और उस लक्ष्य को प्राप्त करने की विधि क्या है।
And Krishna says in the Bhagavad Gita, Manmana bhava mad bhakto mam yaji mam namaskuru mam evaisasi satyam te pratijana priyosi me. Always think of me, become my devotee, offer your worship to me, offer your homage, obeisances. He gives 4 principles by which bhakti is complete. तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह भगवान 4 सिद्धांत बताते हैं जिसके माध्यम से हमारी भक्ति पूर्ण बनती है। So the spiritual master teaches that. He doesn't teach anything else. आध्यात्मिक गुरु भी इसके अलावा और कुछ नहीं सिखाते, Otherwise, he's not guru, but he's guru. वरना वो गुरु नहीं है, गरु हैं, गाय गाय। Guru means animal. गुरु मीन्स पशु। Yeah, pashu. So the spiritual master has no other business but to give Krishna in the form of instructions by how one can serve the Lord. That is the only business of the spiritual master. तो गुरु के पास यही कार्य है कि अपने उपदेश के माध्यम से शिष्य को ये बताएं कि कृष्ण को कैसे प्राप्त करना है। तो So Krishna empowers his representative to act on his behalf and to accept worship on his behalf. तो कृष्ण अपने प्रतिनिधि गुरु को ये शक्ति प्रदान करते हैं कि वो उनके स्थान पे कार्य कर सकें और उनके स्थान पे पूजा ग्रहण कर सकें। If the spiritual master thinks he's receiving worship, if he thinks it's for himself, then he is no longer qualified to be a spiritual master. यदि गुरु ये सोचे कि ये जो पूजा हो रही है इसका अधिकारी मैं हूँ, तो वो और गुरु कहलाने के काबिल नहीं है। He doesn't say, he says, all glories to his spiritual master. गुरु इसलिए कहते हैं कि मेरे गुरुदेव की जय हो। By worshiping his spiritual master, he is offering his bhakti that he receives from his disciple to his spiritual master, which goes all the way back to Krishna. तो आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों से जो पूजा स्वीकार करते हैं वो उसे अपने गुरुदेव को प्रदान करते हैं इस तरह कह के, और अंत में वो पूजा कृष्ण तक पहुंचती है। What pleases the spiritual master? गुरुदेव को क्या प्रसन्न करता है? There was an incident in the life of Srila Prabhupada. He was in Atlanta, Georgia, in America, and many of the disciples had come to see Prabhupada. There were hundreds that came just to be with Prabhupada. तो श्रील प्रभुपाद एक बार अटलांटा जॉर्जिया अमेरिका में थे और वहाँ पे कई सौ शिष्य प्रभुपाद जी से मिलने आए थे। And there were many book distributors there. बहुत सारे पुस्तक वितरण करने वाले भक्त भी थे वहाँ पे। And everyone knew how much Srila Prabhupada wanted his books distributed. और सभी जानते थे प्रभुपाद जी कितनी इच्छा थी कि मेरी पुस्तकों का वितरण अधिक से अधिक हो। So after Prabhupada spoke, there was questions. तो प्रभुपाद जी ने कुछ देर प्रवचन दिया, फिर प्रश्न उत्तर चल रहे थे। And one book distributor, one of the leading book distributors, he asked a question. और एक प्रमुख पुस्तक वितरक भक्त ने प्रश्न पूछा। But he was thinking he knows what Prabhupada's going to say. He knows what the answer is going to be. लेकिन पुस्तक वितरक का मन में ऐसा लग रहा था कि मैं पहले से उत्तर जानता हूं कि प्रभुपाद जी क्या बताने वाले हैं। So he said, Srila Prabhupada, what pleases you most? तो उन्होंने प्रश्न पूछा, श्रील प्रभुपाद आपको सबसे ज्यादा पसंद क्या चीज करती है? Obviously, he was thinking Prabhupada's going to say, distribute my books. तो स्वाभाविक है वो भक्त सोच रहा था प्रभुपाद जी बोलेंगे कि मेरी पुस्तकों का वितरण मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। Prabhupada said something else. प्रभुपाद ने कुछ और ही कहा, लेकिन Prabhupada said the business of the spiritual master is to teach the disciple to love Krishna. बोले आध्यात्मिक गुरुदेव की सेवा या कार्य ये है कि अपने शिष्यों को सिखाए कृष्ण से कैसे प्रेम करना है। That's the only business of the spiritual master, is to guide his disciple on the path of bhakti so they can awaken their eternal love for Krishna. गुरुदेव का यही कर्तव्य है कि शिष्य को भक्ति के मार्ग पर मार्गदर्शन प्रदान करें ताकि वो कृष्ण के प्रति अपने सुप्त प्रेम को जागृत कर पाए। There may be many instructions that the spiritual master gives in order to engage the disciple, but ultimately
the goal is to awaken love for Krishna. हो सकता है गुरुदेव बहुत सारे उपदेश देते हैं अपने शिष्यों को अलग अलग सेवाओं में लगाने के लिए, लेकिन उनका अंतिम उद्देश्य ये है कि कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना। Nitya Siddha Krishna Prema Saru Kabunoi Sravanari Siddhi Chitte Kodiye Udoi. In the hearts of all living entities, pure love for Krishna is there. सारे जीवों के हृदय में कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम पहले से ही है। And that is the only business of the spiritual master. उसको जागृत करना है और यही गुरुदेव का एकमात्र कार्य है। Once a year we worship the spiritual master on his birthday. हम वर्ष में एक बार आध्यात्मिक गुरु की पूजा करते हैं उनके जन्मदिन के दिन। And we offer so many things, so many praises, so many eulogies, so many gifts. It's all part of the worship. और हम उनको बहुत सारी पूजा या प्रार्थना या उपहार ये सब हम अर्पित करते हैं, ये सब पूजा का एक अंग है। And that's nice. और ये तो बहुत अच्छा है। It's for the benefit of the disciples. ये सब शिष्य के लिए बहुत ही लाभकारी है। But if the spiritual master thinks, oh, this is all for me, then he is also, what we say, asara. Asara means useless. आध्यात्मिक गुरु यदि ऐसा सोचते हैं कि ये सब मेरे लिए है या मैं इसके योग्य हूँ, तो वो भी जो हैं अयोग्य हो जाते हैं। So the spiritual master becomes happy when he sees the devotees making nice progress towards love of God. तो आध्यात्मिक गुरुदेव तब प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरा शिष्य कृष्ण प्रेम की दिशा में प्रगति कर रहा है। He becomes happy when he sees his disciples are eager to offer service. वो बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे शिष्य सेवा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। He especially becomes happy when he sees his disciples preaching Krishna consciousness to others. विशेष रूप से बहुत प्रसन्न होते हैं जब वो देखते हैं कि मेरे शिष्य जो है कृष्ण भक्ति का प्रचार दूसरों को कर रहे हैं। This is what pleases the spiritual master, which is all centered around awakening our love for Krishna. ये सबसे आध्यात्मिक गुरु प्रसन्न होते हैं और इन सब का केंद्र बिंदु यही है कि कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत करना है। And so we accept this worship on behalf of the Supreme Personality of Godhead. तो आध्यात्मिक गुरु इस सेवा को स्वीकार करते हैं, पूजा को स्वीकार करते हैं भगवान के प्रतिनिधि के रूप में। Because Krishna is called Adi Guru. जैसे कृष्ण को हम कहते हैं आदि गुरु। He is the original spiritual master who manifests himself in varieties of personalities who is a representative, but they are all one. तो भगवान कृष्ण आदि गुरु हैं जो अपने आप को प्रतिनिधि के रूप में कई गुरु के रूप में आते हैं, लेकिन आखिर में सभी गुरु जो हैं वो एक हैं। And that is what a spiritual master teaches. If he doesn't teach surrender to Krishna, then he is not actually a spiritual master. और यदि आध्यात्मिक गुरु कृष्ण के प्रति समर्पण नहीं सिखाते हैं तो वास्तव में वो गुरु है ही नहीं। So Srila Prabhupada has taught us by his own personal example what it means to be a representative of Krishna. श्रील प्रभुपाद ने अपने व्यक्तिगत उदाहरण से हमें सिखाया कि कृष्ण के प्रतिनिधि होने का मतलब क्या है। He would say, in reference to his disciples, श्रील प्रभुपाद अपने शिष्यों के संदर्भ में ये कह सकते थे, my disciples are representations of my spiritual master. वो कहते थे मेरे जो शिष्य हैं वो मेरे आध्यात्मिक गुरु के प्रतिनिधि हैं। Because, Prabhupada speaking, because I want to spread Krishna consciousness, I want to follow his order, my spiritual master has sent me, all of you, to assist me in serving him. Therefore, you are also my spiritual masters. श्रील प्रभुपाद कहते थे कि चूंकि मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया था कि कृष्ण भक्ति का प्रचार विदेशों में हूँ, मैं उनके आदेश को पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मेरे गुरुदेव ने आप सभी को मेरी सहायता करने के लिए भेजा है इस प्रचार आंदोलन में, इसलिए आप सभी भी मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं। So the spiritual master sees his disciples also in one sense as being his spiritual masters.
तो एक दृष्टि में आध्यात्मिक गुरु अपने शिष्यों को भी एक दृष्टिकोण से अपने गुरु के रूप में ही देखते हैं। But they've come in the form of his disciples so he can guide them in devotional service. That is his service. लेकिन वो चूंकि शिष्य के रूप में आए हैं, इसलिए गुरु उनका मार्गदर्शन करते हैं कृष्ण भक्ति के मार्ग में, क्योंकि ये गुरु की सेवा है। And therefore, one should understand that the words of the spiritual master are ultimately the words of Krishna. इसलिए एक शिष्य को ये समझना चाहिए कि गुरु की जो वाणी है आखिरकार वो कृष्ण के ही शब्द हैं। We might say, well, how do I find a spiritual master? कोई कह सकता है कि कैसे मैं आध्यात्मिक गुरु को ढूंढूं? It's not by some physical appearance. ये कोई शारीरिक हाव भाव या शारीरिक रूप रंग के आधार पर तो गुरु का चयन नहीं होता है। How nice he smiles. कितनी प्यारी मुस्कुराहट देते हैं गुरु, How perfect his tilak is. या कितना अच्छा तिलक लगाते हैं, उससे गुरु चुन लें। How nice his dhoti is, cut so nicely with the right color, wearing it very perfectly. कितनी अच्छी धोती पहनी है, रंग वगैरह ठीक है, अच्छे से पहनी है। How he jumps up and down in kirtan. कैसे कूदते हैं कीर्तन में। Spiritual masters understand jive suruma. What is that? No. By his vakya, by his words. तो आध्यात्मिक गुरु को समझने के ये सब लक्षण नहीं है। आध्यात्मिक गुरु को समझ सकते हैं उनकी वाणी के माध्यम से। Atasi Krishna namari nabhavedrayam indriya sevu mukhehi jivado swayameva spurataya. By his vakya, you understand ultimately what is the path of bhakti. तो गुरु की वाणी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भक्ति का मार्ग क्या है। So one should hear regularly from the spiritual master. तो शिष्य का ये कर्तव्य है कि आध्यात्मिक गुरु से नियमित रूप से श्रवण करे। It's not that, well, I'm initiated now, got my name, I got something to do, I'll see you later, Maharaj. ऐसा नहीं कि दीक्षा मिल गई, नाम मिल गया, कोई सेवा मिल गई, ठीक है महाराज, आपसे बाद में मिलेंगे। No time for guru, got too many things to do. No time for the guru, we have too many things to do. ऐसा नहीं कि हम इतने व्यस्त हो गए कि हमारे पास गुरु के लिए या गुरु से श्रवण करने के लिए समय नहीं है। But we understand by example, just like Maharaj Parikshit, he heard from Sukadeva Goswami 7 full days without any break. तो इस श्रवण के हमारे पास उदाहरण भी हैं। हम देखते हैं परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूरे 7 दिन बिना किसी रुकावट के श्रवण किया। And the spiritual master continues to give the transcendental knowledge. We have to continue to hear it more and regularly. और आध्यात्मिक गुरु इस प्रकार हमें दिव्य ज्ञान प्रदान करते रहते हैं और हमें उनसे दिव्य ज्ञान का श्रवण करते जाना चाहिए, अधिक से अधिक और अधिक नियमित रूप से। Because the material energy is always trying to divert our attention away from spiritual activity, spiritual knowledge. क्योंकि भौतिक शक्ति हमेशा प्रयास कर रही है कि आध्यात्मिक गतिविधियों, आध्यात्मिक ज्ञान से हमारी चेतना को दूर ले जाए। So this Shravanam is the most important. तो इसलिए श्रवणम जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। That's how we find a spiritual master. श्रवणम के माध्यम से ही तो हम आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करते हैं। And that's how we learn from the spiritual master. All by Shravanam. और उसके माध्यम से ही हम उनसे सीखते भी हैं। सब श्रवण के माध्यम से होता है। And the more we hear the transcendental knowledge, the more the heart becomes free from the tendency to enjoy this material world, and one starts to awaken that desire to serve the Supreme Lord in devotion. और जितना हम आध्यात्मिक श्रवण करते हैं उतना ही भौतिक जगत को भोग करने की हमारी इच्छा कम होती जाती है और भगवान की सेवा करने की इच्छा और बलवती होती चली जाती है। But it's all Krishna's mercy. लेकिन ये सब होता है कृष्ण कृपा से। Krishna is also known as the spiritual master. He's called Antaryami. He is the spiritual master inside.
कृष्ण को भी आध्यात्मिक गुरु माना जाता है अंतर्यामी के रूप में। वो हैं हमारे हृदय में स्थित गुरु, चैत्य गुरु। And the spiritual master in person is Krishna's representative outside. So both, Prabhupada would say, you would need two. You need to hear both from Krishna and from the spiritual master. तो कृष्ण हृदय में है चैत्य गुरु के रूप में, और उनका बाहरी जो प्रकाश है वो है आध्यात्मिक गुरु। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि हमें दोनों से ही सुनना जरूरी है, कृष्ण से भी और आध्यात्मिक गुरु से भी। And what's the result? By continuous hearing and understanding, और इस प्रकार हम नियमित रूप से श्रवण करेंगे और उसको समझेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? Yasya Devi Para Bhaktir Yata Devi Tata Guru Tasyaita Kartitam Dyata Prakasanatma Mahatmanaha. That one gets implicit faith, that faith which is not broken by any material situation. One gets firm, stradha, faith in Guru Krishna, and by that faith, all knowledge is given. तो इस प्रकार नियमित रूप से श्रवण करने से हमें भगवान के प्रति, गुरु के प्रति अनन्य श्रद्धा प्राप्त होती है। ये अनन्य श्रद्धा किसी भौतिक परिस्थिति में हिलती नहीं है, और अनन्य श्रद्धा जब प्राप्त हो जाती है तब सारा दिव्य ज्ञान हमें प्राप्त प्रदान किया जाता है। Satatam Kirtayantam. One has to hear and chant the glories regularly. सततम कीर्तयन्तो माम, इसका मतलब भगवान की महिमा को श्रवण और कीर्तन नियमित रूप से करना है। And that's the instructions of the spiritual master. और आध्यात्मिक गुरु का यही उपदेश होता है। Read the books. पुस्तकों का अध्ययन कीजिए, Understand the books. समझिए, Learn how to apply that knowledge in day-to-day life. उस ज्ञान को नियमित जीवन में अपनाना सीखिए। And if there's any questions, ask. और यदि कोई प्रश्न आते हैं अपनाते वक्त तो पूछिए। Sometimes disciples, the devotees think, I don't want to bother my spiritual master by asking him questions. He's so busy. कभी कभी शिष्य सोचते हैं कि अरे आध्यात्मिक गुरु से प्रश्न पूछ के उन्हें परेशान क्यों करना, वो तो वैसे ही इतने व्यस्त हैं। We hear like that sometimes, or even we think like that. Oh, he's busy. He doesn't, he's got more important things to do than hear from me and answer my questions, कभी कभी ऐसा हम सुनते हैं ना, सोचते भी हैं कि अरे आध्यात्मिक गुरु इतने व्यस्त हैं, तो बहुत सारी सेवाएं हैं उनके बाद, मेरे प्रश्न सुनने से ज़्यादा कुछ सेवाएं हैं। But the prime business, or the first business, the most important business of the spiritual master is to make sure his disciple is getting everything they need to make progress in devotional service. Therefore, he's always there for his disciples. तो आध्यात्मिक गुरु का लेकिन मुख्य कर्तव्य यही है कि वो ये देखें कि उनके सारे शिष्य कृष्ण भावनात्मक मार्ग प्रगति कर रहे हैं, और इसलिए वे अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा ही उपस्थित रहते हैं। And so it's important that if we ever have some obstacles, difficulties, or questions, please, this is important. Get your clarification, stay fixed in your devotional service, because Maya will create doubts. That is her business. She gives you doubts. तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भक्ति के मार्ग में कोई रुकावट आए या संशय आए तो हम गुरु से उसके बारे में स्पष्ट उत्तर प्राप्त करें, क्योंकि माया का कार्य ये है, माया समस्याएं उत्पन्न करेगी, माया हमारे लिए संशय उत्पन्न करेगी। And by hearing submissively from the spiritual master, and all our doubts are destroyed. और यदि हम गुरु से विनीत भाव से श्रवण करते हैं तो हमारे सारे संशय चूर चूर हो जाएंगे। And then we can make progress on the path of devotional service. और उसके बाद हम भक्ति में सेवा के मार्ग पे उन्नति पकड़ सकते हैं। So we take a spiritual master in order to learn about and love Krishna. That is the goal. That is the purpose. तो हम आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करते हैं कृष्ण के बारे में जानने के लिए और कृष्ण से प्रेम करने के लिए। There's no other purpose. और कोई उद्देश्य नहीं है गुरु स्वीकार करने का। Although it may seem like there are other purposes because we speak about the many subject matters, but ultimately everything leads to the idea that I am what is it? Eneshya Sadi Maya Nasi Bada Ragi
Hari Nam Namha Mantra Lao Tumi Magi. हो सकता है कि और बहुत उद्देश्य हमें लगे गुरु स्वीकार करने के, लेकिन आखिरकार ये उद्देश्य तक ही पहुँचते हैं जिस तरह बताते हैं कि इनेशी औषधि माया नाशी बारा लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मागी. Chant the holy names of the Lord. That is the most, when Srila Prabhupada was asked, what is your most important instruction to your disciples? श्रील प्रभुपाद से पूछा गया, आपका सबसे महत्वपूर्ण उपदेश आपके शिष्यों के लिए क्या है? There's one thing that's good about this movement. Every possible question that you could possibly think of, they asked Prabhupada. इस आंदोलन के विषय में एक अच्छी बात बहुत ये है कि हर वो प्रश्न जिसके बारे में आप सोच सकते हैं वो श्रील प्रभुपाद से पूछ लिया गया है. Because the Americans, they don't take anything for granted. They want to know everything. क्योंकि अमेरिकी लोगों की बात यह है कि वो ऐसे तुरंत ही किसी चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, वो उसकी गहराई में जाके उसको अपनाते हैं. And they're not easy to convince either. और अमेरिकी लोगों को समझा देना इतना आसान भी नहीं है. They used to argue with Prabhupada too when he would give his answers. तो जब प्रभुपाद जी उत्तर देते तो साथ में बहस भी करते थे अमेरिकी लोग उनसे. That's the American mood, you know. We know. अमेरिकियों का भाव ही ऐसा है कि हम तो जानते हैं सब. But if you think you know, then you don't know. लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं जानता हूं तो मतलब आप नहीं जानते हो. But if you ask, then you'll know. लेकिन यदि पूछोगे तो उसके बाद जान पाओगे. What is that verse? I'm trying to think of this one verse. It's a song by Srila Bhakti Vinod Thakur. Huh? Oh yeah, what is the most important instructions? And Srila Prabhupada answered, to chant every day 16 rounds on beads without fail. तो श्रील प्रभुपाद ने उत्तर दिया, 16 माला का रोज जप करना, माला पे 16 माला जप करना बिना किसी नागा किए हुए. He didn't say the most important instruction is to give me presents on Vyas Puja. He didn't say that. श्रील प्रभुपाद ने ये उत्तर नहीं दिया कि व्यास पूजा के दिन पे सबको उपस्थित रहना है, ये सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है. ऐसा He नहीं. said the most important instruction is to chant Hare Krishna as given by our spiritual vow on initiation, 16 rounds on beads without fail. तो श्रील प्रभुपाद ने यही कहा कि सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है जो कि दीक्षा के समय ही बताया जाता है कि 16 माला प्रतिदिन बिना किसी उसमें रुकावट हुए उसको जप करना. Because the chanting of the holy names is the means by which we can purify the heart and awaken our love for Krishna and ultimately attain pure devotional service. तो चूँकि हरि नाम का कीर्तन ही वो माध्यम है जिसके माध्यम से हृदय शुद्ध कर सकते हैं, कृष्ण के प्रति प्रेम को जागृत कर सकते हैं और शुद्ध भक्ति में सेवा में युक्त हो सकते हैं. Now the spiritual master, his business is simply Krishna's business. आध्यात्मिक गुरु का जो कार्य है इस प्रकार से वही कार्य वो करते हैं जो कृष्ण का कार्य है. Krishna's business is to give himself to everyone. कृष्ण का उद्देश्य ये है कि सब मुझे प्राप्त करें. Because that is the only thing we need. As Srila Bhakti Siddhanta Saraswati would say, there's only one lack in this world, lack of Krishna consciousness. That's all. क्योंकि वास्तव में हम सब कृष्ण ही हमारी एकमात्र इच्छा हैं या एकमात्र हमारे लिए चाहने योग्य हैं. श्रील भक्त साहब कहते थे प्रभुपाद गुरु महाराज की, इस जगत में सब कुछ है, एक चीज की कमी है, वो है कृष्ण भावनामृत. Because this world is simply meant for the defeat of the living entities. That's all. क्योंकि इस जगत का उद्देश्य ही है कि जीव इसमें दुखी रहे. Whatever you have in this world is subject to the time element. जो भी इस जगत में आपके पास है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही है. Prabhupada said, whatever you have, it will leave you or you will leave it. प्रभुपाद जी कहते थे जो भी वस्तुएं आपके पास हैं समय के साथ या तो आप उन वस्तुओं को छोड़ के चले जाओगे या वस्तुएं आपको छोड़ के चली जाएंगी. But we don't like that. लेकिन हमें ये बातें पसंद नहीं आती हैं. We want happiness that doesn't change, that it gets better. हमें ऐसी क्षणिक वस्तुएं नहीं चाहिए, हमें ऐसा आनंद चाहिए
जो बदले नहीं बल्कि बढ़ता चला जाए। We want to be happy all the time. That is our nature. हम नित्य आनंद में रहना चाहते हैं, यही हमारा स्वभाव है। Not in this world. लेकिन इस जगत में संभव नहीं है। That's why this world is called Anda or Tama. It is a place of ignorance, darkness. इसलिए इस जगत को अंधः या तमः अज्ञान का अंधकार का स्थान कहा गया है। Paraspara, what is that? Parabayod, Paraspaya Bhavanya Vyakta Vyokta Sanatana. There's another place where there is no darkness, just light. There is no ignorance, but pure knowledge. That is the spiritual world. That is our home. लेकिन इस जगत के परे एक स्थान है जहाँ पे कोई अंधेरा नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है, अज्ञान नहीं है, ज्ञान ही ज्ञान है। वही हमारा आध्यात्मिक जगत है और वही हमारा वास्तविक घर है। And Krishna is waiting for you. और कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं उधर। He's saying, when are they going to come back? कृष्ण बोल रहे हैं कि कब आओगे वापस? And everyone who comes back to Krishna in the spiritual world, Krishna personally greets them. और जब भी कोई जीव अध्यात्म जगत से वापस लौटता है तो कृष्ण स्वयं उसका वहाँ पे स्वागत करते हैं। Krishna says, "Oh, my dear friend, my dear lover, thank you. I've been waiting for you for a long time." कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, मेरे मित्र, मैं बहुत समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए। So don't make Krishna wait too long. तो आप लोग कृष्ण से बहुत इंतजार मत करवाइए। Prabhupada said, "Finish up in this life. You can do it." प्रभुपाद जी ने कहा, इसी जगत में भगवत धाम लौटना है अपने को। If we apply ourselves to the process of devotional service continuously, without deviation, then the heart becomes full in devotion and becomes purified. तो यदि आप ये जो विधि विधानों का पालन करते हैं भक्ति के बिना विचलित हुए, तो आपका हृदय भक्तिमय होगा और हृदय शुद्ध हो जाएगा। Everything centers around following the instructions of the spiritual master and engaging in devotional service. तो इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु के उपदेशों का पालन करना और भक्ति में सेवा में लगना। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada ki jai. Shall we get questions? Is there anyone would like to ask a question, make a comment? कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कोई टिप्पणी Over here. पूछ सकते हैं। Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much, Guru Maharaj, for emphasizing the importance of the parampara. Voice is clear? Okay. Maharaj, few days back in Bhagavatam class, you mentioned the pastime of this Brahmanand Maharaj and Gargamuni Prabhu, and how they, following the instruction of Prabhupada, they showed the dependence on holy name. But in our life, like even a little difficulty comes. In our life, what? Even a small difficulties, we are not able to take the Krishna consciousness seriously. Means our chanting got disturbed, our dealings with the devotees, Vaishnav, it got disturbed. So how we can maintain that kind of faith that Your Holiness and other Prabhupada followers, they maintain? Although they have not spent sufficient time, but from the beginning only they have lot of faith in the holy name and Prabhupada. How we can develop this? Can you? हरे कृष्ण। तो प्रश्न ये है कि श्रील प्रभुपाद जी ने अपने कई शिष्यों को आदेश दिया, जैसे ब्रह्मानंद प्रभु को आदेश दिया था, और कठिन परिस्थितियों में भी उनका हरिनाम में दृढ़ विश्वास था
लेकिन हम देखते हैं कि हमारे केस में जब हमारी थोड़ी भी समस्याएं आती हैं तो हमारा हरिनाम अच्छे से नहीं हो पाता है, भक्तों संबंधों में समस्या आ जाती है। तो जिस तरह आपका या अन्य महान महान शिष्यों का प्रभुपाद के हरिनाम में दृढ़ विश्वास है, तो कैसे हरिनाम में हमारी अन्य श्रद्धा कैसे आए? Faith comes by purity. जो श्रद्धा है वो शुद्धता से आती है। Purity means to simply follow exactly the process of bhakti as given by the spiritual master. That is purity. शुद्धता का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु ने जो विधि बताई है उसका यथारूप में पालन करना। We're not speaking about pure devotional service, we're speaking about pure action. हम यहाँ शुद्ध भक्ति में सेवा की बात नहीं कर रहे हैं, शुद्धता से कार्य करने की बात कर रहे हैं या सेवा करने की बात कर रहे हैं। Krishna, in the Srimad Bhagavatam, in the first canto, it's explained that one should hear regularly with rapt attention. Rapt means complete absorption. श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद में बताया है कि हमें पूर्ण तल्लीनता से मग्न होकर श्रवण करना चाहिए। But one cannot come to that stage of rapt attention who's not pure in mind. लेकिन वो ध्यान या तल्लीनता से श्रवण की अवस्था तब तक नहीं आएगी जब तक हमारा मन अशुद्ध है। And one cannot be pure in mind unless they're pure in action. और मन तब तक शुद्ध नहीं होगा जब तक हमारे कार्य शुद्ध नहीं है। That means the activities they perform इसका मतलब जो कार्य हम करते हैं वो शुद्ध होने चाहिए, should be in line with the instructions of the spiritual master and Krishna. मतलब वो कार्य आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की आज्ञा अनुसार होने चाहिए। But then it says one cannot be pure in action unless they're pure in eating, sleeping, mating, and defending. लेकिन आगे कहा जाता है कि हमारे कार्य तब तक शुद्ध नहीं होंगे जब तक आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में हम शुद्ध नहीं होंगे। So we must very carefully regulate our bodily activities and perform devotional service at the same time. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बहुत सावधानी से अपनी शारीरिक यानी कि आहार, निद्रा को भी नियमित रखें और साथ ही भक्ति में सेवा में भी संलग्न रहें। Otherwise, the bodily activities will disturb our mind, divert our mind away. If we are not very carefully regulated in eating, sleeping, mating, mating means for those in grihastha life, and of course defending. वरना शारीरिक कार्य हमारे मन को भी प्रभावित करेंगे और उससे हम भक्ति में स्वयं विचलित हो जाएंगे, इसलिए आहार, निद्रा, भय, मैथुन के मामले में हमें नियमित रहना चाहिए। You see, Srila Prabhupada, he not only did he preach, but he also taught by personal example. हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी ने न केवल प्रचार किया बल्कि अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भी सिखाया। He was highly regulated. वो बहुत ज़्यादा उनका जीवन नियमित था। So regulated that when he would travel from one place to another, change time zones, whatever time it was when he arrived, he would begin his day activities at that time in that place. उतना नियमित जीवन था उनका कि वो कहीं भी जहाँ भी जाते थे, जैसे ही उस जगह पे उतरते थे, अपनी नियमित दिनचर्या वहीं से आरंभ कर देते थे। Prabhupada was so regulated that you could set your watch to Prabhupada's activity. इतनी नियमित जीवन शैली थी कि आप उनकी जीवन शैली के हिसाब से अपनी घड़ी मिला सकते थे कि कितना बज रहा होगा अभी। Of course, in emergencies, when something comes up, breaks the regulation, that is understandable and acceptable. But generally, we should be very regulated in our activity. And then it'll become easier to develop that faith, and that purity will naturally develop. Otherwise, we are doing two things at a time. We are doing the right thing, but we're watering down the effects of the right thing by not being organized in our day-to-day activities. तो निश्चित रूप से जब कोई आपातकालीन स्थिति आती है उस समय ये नियम कभी कभी इधर उधर हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन
रोज की दिनचर्या में इन्हें अपनाना ही चाहिए, क्योंकि यदि हम नहीं अपनाते हैं तो हमारी जो स्थिति है वो धीरे धीरे हम खराब करते चले जाते हैं। And read the books, और साथ ही किताबों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, especially Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. विशेष रूप से भगवत गीता श्रीमद् भागवतम का अध्ययन, And everything will become understandable and clear. और उससे आपको सब कुछ समझ में आएगा स्पष्ट रूप से। Prabhupada put so much time, energy, effort in writing these books just for us. प्रभुपाद जी ने बहुत समय और बहुत प्रयास किया है इन पुस्तकों के लेखन में, और ये हमारे लिए किया है। He wanted us to read them, not just distribute them. प्रभुपाद चाहते हैं कि हम इन पुस्तकों का अध्ययन भी करें, न केवल इनका वितरण ही करें। Hare Krishna. हरे कृष्ण। There's one. बसंत प्रभु पीछे। Oh, okay. Hare Krishna. Thank you very much, Maharaj. Maharaj, my question is, what is the importance of prasad? It plays in the progress of a devotee. And what if a devotee, even though he is chanting 16 rounds, but being as we are grasta, we are facing so many conflicts and different situations. So when the Mataji is cooking with improper mood, so whether it will be accepted by Krishna or what will be the case in that situation? Like so many times we have seen in the temples, there are conflicts between different devotees, and they go and do their services, and they do the cooking for the lordships and other devotees. So whether it will be accepted as a prasad or what will be the case? तो प्रश्न ये है कि जैसे हम गृहस्थ जीवन में हैं तो कई बार माता जी यदि गलत मूड में हैं और खाना बनाती हैं तो क्या भगवान उसे स्वीकार करेंगे, और ये इस तरह से प्रसाद का भक्ति जीवन में क्या महत्व है। हालांकि हम 16 माला कर रहे हैं, इस मंदिर में कई बार इस तरह देखते हैं कि भक्त में कोई आपस में तनाव है और वो उस मूड में जाके सेवा करते हैं, तो क्या सेवा भगवान स्वीकार करेंगे? What is actually prasad? That's your question. There is prasad and then there is prasad. प्रसाद वास्तव में क्या है, आपका ये प्रश्न है। Just because you're cooking and offering doesn't mean it's prasadam. केवल आप खाना बना रहे हैं और उसको भोग लगा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि प्रसाद बन गया। Krishna accepts it, then it becomes prasad. कृष्ण जब स्वीकार करेंगे तभी तो प्रसाद बनेगा। So there's some preliminary principles that one has to follow. लेकिन कुछ प्राथमिक सिद्धांत हैं जिनका तो पालन हर एक को करना ही है। Cleanliness, जैसे शुद्धता रखनी है, high standard of cleanliness. शुद्धता के उच्च स्तर होना चाहिए, Regulation also. और नियमितता होनी चाहिए। And of course, if one is cooking for the Lord, they require to be Brahminically initiated. और निश्चित रूप से यदि कोई भगवान के लिए भोग बना रहे हैं तो ये उनको ब्राह्मण दीक्षा होना भी आवश्यक है। If you're cooking at home, that's different. But if you're cooking for the deity in the temple, then there are many principles you have to follow. Cleanliness, second initiation, clean clothes, everything has to be a high cleanliness standard. यदि घर पे आप बना रहे हैं तो बात अलग है, लेकिन यदि मंदिर में विग्रहों के लिए बना रहे हैं तो ब्राह्मण दीक्षा होनी चाहिए, शुद्धता के उच्च स्तर होने चाहिए, ये सब होना आवश्यक है। Krishna is going to accept your devotion. कृष्ण आपके भक्ति भाव को ग्रहण करने वाले हैं। Now, because of the mercy of the spiritual master, we offer the prasadam to our spiritual master, and then he offers it to Krishna. आध्यात्मिक गुरु की कृपा से जब हम भोग लगाते हैं तो हम उस भोग को गुरुदेव को अर्पित करते हैं और गुरुदेव फिर उसे कृष्ण को लगाते हैं। So there's an element of mercy there. वहाँ पे जो है कृपा का तत्व विद्यमान है। Because we can't approach Krishna directly. क्योंकि कृष्ण तक प्रत्यक्ष रूप से पहुंच पाना तो हमारे बस में है नहीं। The only person who cooks for Krishna is Radharani and Mother Yasoda. That's all. माँ यशोदा और राधा रानी, बस यही जो है वो कृष्ण के लिए खाना बनाते हैं।
And that's why it says that Radharani is in charge of the kitchen. और इसलिए कहा जाता है कि किचन की जो इंचार्ज हैं वो है राधा रानी. You have to please Radharani because you can't just be there and don't know how to cook, you're not clean, you're late or whatever, you're not, whatever you fall below the standard, Radharani is not going to be so happy to offer it to Krishna. तो इसलिए हमें ये सिद्धांतों का पालन करना बहुत ही ज़रूरी है कि हम स्वच्छ रहें, ब्राह्मण दीक्षा और अच्छे से भोग बनाएं. हम बनाना भी आना चाहिए, वरना राधा रानी हमसे प्रसन्न नहीं होने वाली हैं. So everything should be high quality standard, especially cleanliness. That's the most important. तो हर जो चीज़ है बहुत ही उच्च स्तर की होनी चाहिए, विशेष रूप से शुद्धता. And you have to know how to cook too, not just anybody can go in there and practice. It's not about practicing. और साथ ही आपको ये भी आना चाहिए कि भोजन बनाना कैसे है. ऐसे नहीं कि यहाँ अभ्यास करने के लिए वहाँ पहुँच गए, वहाँ कोई अभ्यास करने की जगह नहीं है. When Prabhupada was in Vrindavan, they were doing this food program, so they were cooking for many people. प्रभुपाद वृंदावन में थे तो प्रसाद का कार्यक्रम चल रहा था, प्रसाद वितरण का. So Prabhupada had one day, he asked, let me taste what the devotees are getting. तो प्रभुपाद ने एक दिन कहा कि चलो मैं थोड़ा चखता हूँ कि भक्तों को क्या प्रसाद मिल रहा है. And immediately he got angry. तो तुरंत ही प्रभुपाद खा के गुस्सा हो गए. He said, who is cooking? प्रभुपाद ने कहा कौन बना रहा है. They didn't have a cook, so they got one of the local persons who could cook to cook instead because the devotees were too busy. तो पता चला कि कोई बाहर का व्यक्ति है, वहीं का स्थानीय वो बना रहा है, क्योंकि कुक उस समय था नहीं और भक्त लोग बहुत ही व्यस्त थे. Prabhupada said, this food is not even fit for the dogs. That's what he said. He said, get that person out of the kitchen right away. प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो भोजन है ये तो कुत्तों के खाने के योग्य भी नहीं है. तो उस रसोई को तुरंत ही जो है बाहर निकालो रसोई घर से. So yeah, everything should be ideal, especially cleanliness and knowing how to cook also. तो इस तरह सब कुछ आदर्श स्तर का होना चाहिए, विशेष रूप से शुद्धता और साथ में भोजन बनाना भी आना चाहिए. Yeah. And of course, because we expect that devotees are, cooking, they're second initiated, that means they have come to a certain level of spiritual development where they can cook with devotion. They have made some advancement in spiritual life. और चूंकि जब ये स्तर हम रखते हैं तो भक्त लोग एक स्तर तक आते हैं जहाँ एक स्तर तक उन्नति कर ली है और वो भगवान के लिए भोजन बनाने के योग्य होते हैं. Yeah, so that's a very important part of our worship. तो ये प्रसाद का ये भोग लगाना हमारी पूजा का एक महत्वपूर्ण अंग है. So you're dealing with Krishna directly. क्योंकि उसमें आप प्रत्यक्ष रूप से भगवान कृष्ण के साथ व्यवहार कर रहे हैं. So everything should be of high standard in the temples. तो मंदिर में सब कुछ उच्च स्तर का होना बहुत आवश्यक है. Anyone else? Okay. हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम. आपने आज क्लास में बताया कि जब हम प्रश्न पूछने का मन में आता है तो कई बार ये सोचते हैं कि गुरु महाराज बहुत व्यस्त होंगे, तो हमारी भी कुछ ऐसी स्थिति, हम अपने शिक्षा गुरु से कई बार पूछने में बहुत संकोच करते हैं कि ये गुरु हमारे व्यस्त होंगे, हम कैसे पूछें. कई बार हिम्मत करके पूछते हैं तो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसे हम फॉलो करते हैं लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं. तो फिर हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, हम दोबारा कैसे अप्रोच करें, क्योंकि हमें ये महसूस होता है कि हम तो पूरा अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं जो निर्देश दिए. हरे कृष्ण. So his question is that as Your Holiness mentioned that many times we think that our Guru is busy, or I also think like that my Shiksha Guru is very busy. So when I receive instruction from him, then I am not able to follow those instructions sometime.
then I become confused whether should I approach him because I feel that he is very busy and I am also not able to follow instruction nicely. So in this way, confusion goes on. So what should I do? Well, you have to clarify. It's important. आपको स्पष्टीकरण लेना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है. If you have a difficult time following the instructions, you can express that. Guru Maharaj, this is difficult for me to follow this. He may give you another service, another instruction. यदि कोई उपदेश पालन करने में आपको असुविधा हो रही है, तो आपको जाना चाहिए, बताना चाहिए कि गुरु महाराज ये उपदेश मैं पालन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको कोई और सेवा में लगाएंगे या कोई और उपदेश देंगे. So it's important you get clear, then you know what to do. तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आप स्पष्टीकरण उनसे लें, तब वो आपको मार्गदर्शन देंगे. But if you receive an instructions, you find it too difficult to carry it out, or you don't understand it, and you don't say anything, then you commit an offense. लेकिन यदि ऐसा उपदेश आपको मिल गया जिसे आप पालन नहीं कर पा रहे हैं और आप बता भी नहीं रहे हैं, तो फिर हो सकता है अपराध हो जाए आपसे. By not following the instructions, there is an offense. क्योंकि आप उसका अवज्ञा कर रहे हैं उपदेश की, आज्ञा की, तो वो एक अपराध हो जाता है. So we want to avoid offenses because offenses keep us back in our spiritual practice. तो हम अपराधों से बचना चाहते हैं क्योंकि अपराध जो हैं हमें हमारी भक्ति में पीछे धकेलते हैं. So we should make some effort to get clarification. तो हमें इस प्रयास करना चाहिए जिससे हम जो है उनसे स्पष्टीकरण ले पाएं. As I mentioned, the guru's business is his disciples, his main business. जैसे मैंने बताया, गुरु का जो मुख्य कार्य है वो अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देना. He may have projects, he may be writing books, he may be traveling other places. That's all part of his service, but the main part is his disciples. हो सकता है गुरु कई प्रोजेक्ट्स उनके पास हैं, मंदिर बना रहे हैं, पुस्तकें लिख रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उनकी जो मुख्य सेवा है वो अपने शिष्यों को मार्गदर्शन देना है. So ask and get clarified. तो आप पूछिए और स्पष्टीकरण प्राप्त कीजिए. In the back, all the way. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. मेरा क्वेश्चन ये था कि कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि जब हम अपने व्यवसायिक गतिविधि में, जहाँ ऑफिस या नौकरी में रहते हैं, और उसी समय कुछ हमें ऐसी सूचना मिलती है कि मंदिर में या किसी प्रोग्राम के लिए गुरु महाराज आ रहे हैं या किसी और मीटिंग के लिए हमको कॉल किया जाता है, और उसी समय हम किसी व्यवसायिक या नौकरी से संबंधित इम्पोर्टेंट काम में बिजी होते हैं, वहाँ भी हमें ऑलरेडी कोई हमें सेवा दी गई हुई होती है. तो ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति हो जाती है कि हमें कौन सी चीज़ को फॉलो करें. कृपया मार्गदर्शन दें. हरे कृष्ण. एक बार फिर से बोलेंगे प्रभु, थोड़ा शॉर्ट में. व्यवहारिक जीवन की जिम्मेदारी और मंदिर या मंदिर से संबंधित गतिविधि की कोई जिम्मेदारी हमको एक साथ मिलती है, तो उसमें से हमको उस समय किस चीज का चुनाव करना चाहिए? He is asking that sometimes we are doing our activities like in office or job and we are engaged there, but we also receive devotional instructions also, do this, do that. At the same time, we have to practically do some household activity or like that. So it becomes difficult to balance at that time that whom should I give preference? So what should I do at that time? Well, time for Krishna and there's time for your material duties. You have to organize your time in such a way that you give time for both, that's all. But of course, the most important thing is your spiritual activities, and they should be done early in the morning as a foundation for everything. They should be first. तो कृष्ण के लिए भी समय है, आपके भौतिक गतिविधियों के लिए भी समय है, तो आपको भौतिक गतिविधियां को उनके समय पे करना चाहिए और कृष्ण को जो समय देना चाहिए मुख्य रूप से, और मुख्य रूप से आध्यात्मिक गतिविधियां जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं और इसलिए उनको हमें प्रातः काल का समय प्रदान करना चाहिए. So when we get up in the morning after we take care of, getting clean, we get ready, we do
some puja, we do some chanting, and maybe some worship. We take prasadam, we go out and we do some service for our material life. So there's time for both. तो इस प्रकार जब हम सुबह उठते हैं, नहाते हैं, पूजा करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, प्रसाद लेते हैं, उसके बाद हम हमारे भौतिक कार्य करने के लिए जो सेवाएं हैं उसके लिए जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास दोनों के लिए समय रहता है। If you're feeling satisfied, then that means you're doing the right thing. If you're feeling unsatisfied, then you have to understand why. Maybe I'm not giving enough quality time to my spiritual practice. और यदि आप हृदय में संतुष्टि का अनुभव करते हैं, इसका मतलब आप सही तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आपको असंतुष्टि का भाव है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं गड़बड़ है। हो सकता है कि आप आध्यात्मिक कार्य गुणवत्ता के साथ नहीं कर रहे हैं। If we're feeling satisfied in our devotional service, that's an indication that we are executing we're executing our devotional service in such a way that is pleasing to Krishna. यदि आध्यात्मिक जीवन में हमें संतुष्टि का अनुभव होता है हृदय में, तो इसका मतलब है कि हम भक्तिमय सेवा इस तरह संपन्न कर रहे हैं जिससे गुरु और कृष्ण हमसे प्रसन्न हो रहे हैं। If you're feeling unsatisfied, then you have to see maybe some more time for hearing, for chanting. यदि आपको असंतुष्टि का अनुभव हो रहा है तो थोड़ा विचार करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ज़्यादा श्रवण कीर्तन की आवश्यकता है इस समय, Or association. या ज़्यादा भक्तों के संग की आवश्यकता है। Yeah. So we have to, see by our own experience, am I making progress or am I stuck? तो देखिए, हम खुद के अनुभव से हमको ये समझ में आता है कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या मैं वहीं अटक गया हूँ। And then some adjustment is needed when you feel like you're stuck. यदि आपको लग रहा है मैं कहीं रुक गया हूँ, मैं भक्ति में किसी स्थान पे, तो कुछ न कुछ समायोजन करने की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता है। But plan, organize your day. तो आप योजना बनाइए सारे दिन की और उसके अनुसार जो है अपने दिन को एक नियमित रूप से बिताइए। And when you organize your day, you have time for everything. इस तरह हर दिन का प्रबंधन करते हुए सेवा या कार्य करेंगे तो आपके पास सब चीज़ों के लिए समय उपलब्ध रहेगा। Those who are not organized, they do very little. They can't get much done because they're unorganized. जो लोग इस तरह योजना बना के सेवा नहीं करते हैं वो बहुत ही कम प्राप्त कर पाते हैं, क्योंकि उनके जीवन शैली बहुत ही अनियमित रहती है, अस्त व्यस्त रहती है। Yeah. So that means something you have to work at day by day, becoming more and more organized in your activities. तो ये ऐसा कार्य है जिस पर आपको दिन प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा ताकि और अधिक से अधिक अच्छे है आप प्रबंधन करते जाएं अपने दिनों का। Time for my spiritual practice, and then I have my material duties that requires some attention, some time also. मेरे आध्यात्मिक सेवाएं हैं या आध्यात्मिक गतिविधियों को मुझे समय देना है, और साथ ही मेरी जो भौतिक जिम्मेदारियां हैं उनको भी मुझे समय देना है। The only problem is material duties, they tend to increase. समस्या ये है कि भौतिक जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। If you're working at a job and you're good at it, and they want to give you more things to do, give you a bigger pay, a higher position, and pretty soon you have less time for Krishna. मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं और बहुत अच्छे से वहाँ पे करते हैं, तो आपको पदोन्नति दे देंगे, आपको और ज़्यादा काम दे देंगे, तो उसमें जो है आप और ज़्यादा लग जाते हैं। So the principle is simple living. Live simply. Just live according to your needs, and you always have enough time for spiritual life. इसलिए सिद्धांत ये है, सादा जीवन उच्च विचार। आपकी जो आवश्यकताएं हैं उतनी आजीविका पे ही आप ध्यान दीजिए और बाकी समय आध्यात्मिक जीवन के लिए आपको प्राप्त होता रहेगा। Okay, there's a hand way in the back, all the way in the very back. Okay. It's going to be hard to hear this. We're stopping now?
Hare Krishna. Whereas there are many people for offerings, so now because of that we restrict the time for. You can ask me a At question. the, You at can the ask end, me. Maharaj will be available. You can ask me a question later. I'm still here. महाराज कह रहे हैं कि मैं आप लोगों के लिए यहीं पे हूँ, आप मेरे से जब चाहें प्रश्न पूछ सकते हैं. His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. So we are very grateful to His Holiness Candramauli Swami Maharaj for his wonderful lecture on importance of Guru and how we should approach a spiritual master and how we should focus on hearing from the spiritual master, which increases our faith. And with that implicit faith, everything about transcendental knowledge is known to us. And also Maharaj is extending himself so much. We are seeing Maharaj very mercifully is here for us, and he is leading Kirtan 1 hour, 1.5 hours. Yesterday night he had wonderful Kirtan. So you can see so many disciples are waiting for Maharaj for celebrating his Vyas Puja. Krishna becomes pleased, but when we glorify Krishna's devotees, he becomes more pleased. And that place has a wonderful purifying effect when his devotees are being glorified. So it's a wonderful opportunity for all of us to hear the glorification of wonderful dear servant of Srila Prabhupada, dear son of Srila Prabhupada. So to begin with, we will have glorification session till 12:45. So at that time we will have Pushpanjali and Aarti, and then 1:30 we will have Prasadam. So in that line, first I would like to request His Grace Prema Bhakti Prabhu to please come. His Grace Prema Bhakti Prabhu. After that, His Grace Sundaranand Prabhu and Her Grace Sri Devi Mataji. They both please be ready. Then His Grace Dirgaur Prabhu. Hare Krishna. Om Ajnanotimirandhasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunamilitang Janatasmai Sri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Presthaya Bhutale Srimate Candramauli Swami Niti Namine. Dear Sri Srimad Candramauli Swami Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at your lotus feet. All glories to His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. All glories to Your Holiness. Today is your Divine Appearance Day, Vyas Puja. We, the devotees of Ujjain, are very fortunate because
This year, for the first time, you gave us the rare opportunity to celebrate it in our temple. Personally, I feel more fortunate because I got the chance to glorify your holiness. You have all the divine qualities which a pure devotee is supposed to have. It is stated, Vaishnaver Kriya Mudra Bighe na bujhai. Even a wise person cannot understand and recognize the divine qualities and activities of a pure devotee. How to speak of a fool like me? But for my own purification, I am trying to make an effort to point out some of your divine qualities. In Chaitanya Bhagavat, it is stated, Nana sthane abotirno hoila bhaktagan, naboddipe ashi hoila sabharo milan. Translation, devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu appeared in different parts of the world, but they all came to Navadvip to be united. Maharaj, you appeared in New Jersey, USA in 1947. At the age of 24, you started practicing Krishna consciousness in New York City. And shortly thereafter, you began serving at the New Brindavan farm community in West Virginia. In the same year, you received initiation from His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, the Commander-in-Chief of Sankirtan movement, which was started from Mayapur. In this way, you got a wonderful connection with Sridham Navadvip, Mayapur. It implies that you are undoubtedly a Gauranga Parshad, the associate of Srimad Mahaprabhu. In 1986, you accepted the Sannyas order and began preaching in Cincinnati and Columbus. In 1995, you began serving as the resident sannyasi in Chicago, where you are based today. You are traveling and sharing the ancient Vedic wisdom and offering spiritual guidance to so many people around Europe, UK, USA, and India. Three things are required in Harinam Sankirtan: chanting means leading kirtan, dancing, and playing instruments. The way you dance is really amazing. Why not, Maharaj? Your name is Candramauli Swami, which indicates Lord Shiva. Lord Shiva is famous for his ecstatic dance. He is known as Nataraj, the best dancer. Your dance reminds us of the names of Lord Shiva and Lord Gauranga Mahaprabhu. Nobody can dance in this way without pure devotion. The purpose of your dance is to please Gauranga Mahaprabhu. Mahaprabhu personally liked to dance out of the three aspects of Sankirtan. So whoever dances in Harinam Sankirtan is very dear to him. Thus, you are very, very dear to Gauranga Mahaprabhu. In December 2022, I got your darshan in Govardhan Eco Village, India. You came there along with many of your disciples and followers. You were giving a seminar. Every day in the evening, you were leading kirtan in the temple. It was full of ecstasy. All the devotees were absorbed in chanting after you. The whole atmosphere became grave and full of transcendental sound vibration. Just 2 months ago, I got your darshan in Bhaktivedanta Manor, London. I have noticed wherever you go, you lead kirtan and dance in the same way.
In Ujjain also, Maharaj, you are displaying the same miracle. Your smile can immediately rejuvenate even the most disappointed and frustrated person. Your lecture is very inspiring and powerful, which can immediately dispel the darkness of ignorance of any material person. You are easily accessible. Anytime, anyone can approach you. Your divine association is very holy and purifying. You are very merciful. To deliver the conditioned souls like me, you are mercifully traveling and distributing Krishna Nam, Krishna Prem all over the world, tolerating all the difficulties and tribulations. Your spiritual talks are so enlivening. You speak from your heart without seeing any notes or books. You are well versed. On any topic, you can expound for a long time fluently without being interrupted. It proves that you have profound understanding and high command in the Vedic literature. You have so much realizations. Guru Maharaj, you are acting leader of the Iskcon prison ministry in America. You began visiting inmates, holding programs along with writing letters to inmates and sending to Srila Prabhupada's book. You have been working tirelessly since 1990s to document the spiritual progression of the old-oid jail inmate community. Your dedication to the welfare, growth, and sustainable rehabilitation of these prisoners has culminated in the book Holy Jail, a touching compilation of the activities of the Iskcon prison ministry, IPM. In over 30 years of operation, the lives of hundreds of inmates have changed due to the practice of Krishna consciousness and the support received by devotees. We are also preaching Krishna consciousness, Guru Maharaj. We know what a difficult task it is to change a person who is situated in a normal state, but you are making hundreds of abnormal persons into good devotees. Nobody can do such an amazing service without being spiritually empowered by his Guru and Gauranga. Guru Maharaj, you were born and brought up in a very aristocratic society and were highly educated and qualified. You had so many possibilities to lead your life in material happiness, but you gave up everything and accepted Krishna consciousness as the ultimate goal of your life. Material happiness could not entangle you because you are a Vaikuntha man from the spiritual world. Not only that, you are wandering from place to place to help the people to be free from material pangs and offering them to the lotus feet of your beloved spiritual master, Srila Prabhupada. Prabhupada is your life and soul. And you are wholeheartedly surrendered unto his lotus feet. Material attachment makes a person conditioned, but when one's attachment is applied to a self-realized sadhu like you, he becomes liberated. Guru Maharaj, few days ago, when His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj introduced
all the 3 EC members of our temple management with you, Your Holiness, in your room. You told me that I should serve the Vaishnavas. Yes, Guru Maharaj, I like to fulfill your desire. Because this is one of the most dear services of my beloved spiritual master, His Holiness Bhakti Charu Swami, Guru Maharaj as well. I like to continue the legacy of my Guru Maharaj. You had a very close and sweet relationship with our Guru Maharaj. So, I deeply believe that your desire is the desire of my spiritual master. Please bless me, Guru Maharaj, so that I can always be engaged myself in the service of the devotees, Guru and Gaurango, for their pleasure, without committing any offenses unto them. Always, please also empower me, so I can preach the cult of Krishna consciousness all over the world. Please pardon me if I commit any offense unto your lotus feet, knowingly or unknowingly, during your stay in Ujjain for the last 3 weeks. Your insignificant servant of the servant, Prema Bhakti Das. Revol. Thank you very much, Prema Bhakti Prabhu, for your wonderful offering. Prabhuji mentioned that we beg for blessings of Maharaj, so we can carry on the legacy of our Guru Maharaj. So we beg for blessings of Maharaj. Now we request His Grace Sundarananda Prabhu and Her Grace Sridevi Mataji, both of them, please come and share their offerings with Maharaj and all the devotees. After that, His Grace Dirgaur Prabhu, then Her Grace Anand Vrindavan Mataji from Indore. भक्तों से निवेदन करना चाहेंगे कि समय सीमा को देखते हुए यदि 5 मिनट में हर भक्त अपने श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे तो सभी से सुनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये हमारा विनम्र निवेदन है। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Dearest Maharaj, Sundarananda Krishnadas and I both met you for the first time in January of this year here in Ujjain. And for us, it was like being swept away in an ocean of warmth and ecstasy. But we also could not help but be impacted by the potency of your namesake, Candramauli Maharaj. Lord Krishna's presence removes the darkness of ignorance from our hearts. Therefore, Lord Krishna is compared to the sun. He is also compared to a full moon because he cools our hearts and our lives, which are burning in the volcanic fire of the material world. Because of his cooling quality, the word Chandra, moon, is often added to names of Krishna and his incarnations, such as Sri Krishna Chandra, Sri Ramachandra, and Sri Gaurachandra. Being in the association and service of you, Maharaj, gives us a feeling of relief from the blazing fire of the material energy. You nurture us with your tranquil, calm, and encouraging demeanor, yet you nourish us with your profound depth and wisdom. During the churning of the milk ocean, narrated in the 8th canto of the Bhagavatam, the full moon appeared from the ocean. Thus, Sri Chaitanya Mahaprabhu, paraphrasing the words of Srimati Radharani, says in Chaitanya Charitamrita, Antya Leela 1936, quote, "The family of Maharaj Nanda is just like an ocean of milk, wherein Lord Krishna has arisen like the full moon to illuminate the entire universe," unquote. In a similar way, dearest Maharaj, we feel that the family of Srila Prabhupada is just like an ocean of milk,
wherein personalities like yourself have arisen like the full moon to illuminate our spiritual lives and those of many generations to come. For this, we are eternally in your debt. Maharaj, you inspire us to keep our spiritual endeavor joyful, loving, and relevant. You are a perfect exemplar of Yukta Viragya in the service of Srila Prabhupada's mission. Inspired by our prasadam pastimes, your joyful and humorous mood, and your ecstatic kirtan, we prepared a little Krishna-conscious parody of a Dean Martin song. With your permission, we can present it now, or we can send it to you later. Now? Now? Keeping in mind, Maharaj, we're neither singers nor do we have accompanying lyrics or music, but we will try our best. Okay. In Vrindavan, where love is king, when Krishna meets Radha, here's what they say. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's Hare Krishna. When the sun seems to shine and all is well and divine, that's Hare Krishna. Kartals will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Hare Krishna. Murdangas will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a Sankirtana. When the holy name makes you full, just like a pasta e fasul, that's Hare Krishna. When you dance down the street with a cloud at your feet, that's Krishna Prema. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, dear Maharaj. Scusa me, but you see, back in Vrajabhumi, that's Hare Krishna. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's Hare Krishna. that's Hare Krishna. When the sun seems to shine, and all is well and divine, that's Hare Krishna. that's Hare Krishna. That's Hare Krishna. Maharaj, the benediction of your association has been a blessing of good fortune. The first time we saw you on your last visit to Ujjain, what struck me was your simplicity, your purity, how you carry the potency of the holy name and the mood of Sankirtan, and how joyfully and selflessly you were spreading this message. Most notable was your sense of humor and wit, and I recount many times we were simply left in stitches. However, this is just one aspect of your extraordinarily unique and kaleidoscopic personality. One of the instructions I received from my Guru Maharaj, His Holiness Bhakti Charu Swami, was, whatever you do, do it to the best of your ability. You are someone who renders service to the mission of Srila Prabhupada and the Sankirtan movement to the best of your ability in a most exemplary way. You are selflessly serving as a conduit of the mood of Lord Nityananda, who distributed the mercy of the holy name to the most fallen of society. By engaging in the magnanimous service of prison preaching, giving hope and salvation to those whom even society have ostracized and forgotten. Just by your smile, your magnanimous nature, my heart is inspired to serve the best it can. Through your numerous lectures and discourses, you emphasize the holy name, and we are enthused at how you are a continuous living embodiment of that message. As a dearmost friend and godbrother to our Guru Maharaj, you have so generously given support, shelter, and inspiration to us all. Maharaj, we are grateful for you and to you. Thank you for so graciously tolerating and accepting our unqualified and imperfect service, and for still offering us encouragement and inspiration. Maharaj, we beg for your blessings to
Allow us to take full shelter of the holy name, to allow us to render shelter, to allow us to render service in the best way we can, and to follow the instructions of our spiritual master. We are eternally in your debt and pray for the benediction that we may be eternally in your association. Hare Krishna. Whoa. Thank you very much, His Grace Sundaranand Prabhu and Her Grace Sridevi Mataji, for your poem and your offering to Maharaj, as they very wonderfully gave the analogy or compared that as Krishna has arisen like a full moon in the family of Nanda Maharaj, which is compared to milk ocean, similarly Maharaj, like wonderful pure devotees, has arisen like a full moon in the ocean of Srila Prabhupada's mercy. Rivo. And also, they mentioned the Maharaj is a perfect example of renunciation and service to Srila Prabhupada. Thank you very much. Now, we request His Grace Dirgaur Prabhu to please come. And then after that, we request His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. And after that, Her Grace Anand Vrindavan Mataji. Please be ready. Hare Krishna. I'll read the offering of Iskcon Ujjain temple on behalf of all the devotees. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Candramauli Swami Nitya Namine. Dearest His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj, please accept our most humble and respectful obeisances unto the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada and to your holiness. Srila Prabhupada mentions in purport to Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavat Sevaya verse that there are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavata and the devotee Bhagavata. A devotee Bhagavata is as good as the book Bhagavata. And we know by association of such pure devotees, even for a fraction of a second, one can attain all success. Sadhu Sangha Sarva Shastre Koy, Lavamatra Sadhu Sangha Sarva Siddhi Hoy. We are indebted to your unlimited compassion for Iskcon Ujjain that you have agreed to give us your association for more than 3 weeks. And you have even magnified your mercy by allowing us to celebrate your most auspicious Vyasa Puja. Maharaj, your ecstatic Kirtan drowns the devotees in an ocean. On Iskcon Ujjain for giving us your valuable association. By your divine presence, devotees are feeling much sheltered and secure. Maharaj, we need your blessings so that we can follow and spread the teachings of Lord Chaitanya, which are given to us by His divine grace, Srila Prabhupada, and His loyal followers. We request you to shower your blessings on us to have increased Srila Prabhupada's book distribution. Our devotees stay fixed up in Krishna consciousness, and we can have more devotees and happy devotees in our temple and congregation. By folding our hands and holding grass between our teeth, we seriously apologize for all the offenses that we have committed knowingly and unknowingly at your lotus feet. Considering us your unqualified and unworthy servants, please forgive us. We are highly obliged to your holiness for accepting our trivial
and insubstantial services. Maharaj, this is our insignificant offering. Please give us the shade of your lotus feet so that we can continue to serve Shri Guru and Shri Gauranga. We beg to remain the humble servants of your servants, devotees at Iskcon Ujjain. His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj ki. Thank you very much, Dear Gaur Prabhu, for reading out the offering of Iskcon Ujjain devotees to Maharaj. Dear Gaur Prabhu mentioned that about the ecstatic dance of Maharaj. By mercy of Srila Prabhupada, we have got this wonderful chance. We are receiving association of Maharaj and his merciful glance and his wonderful kirtan. We cannot help us but to dance, dance and dance. So now we have His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj. After that, Her Grace Anand Vrindavan Mataji. ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चंद्रमौली स्वामिते नामिने। नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषण्यवादी पश्चात्तरस्ते। Srimad Chandramauli Swami Guru Maharaj ki jai. Dear Vash Maharaj, please accept my most humble obeisances unto the dust of your divine lotus feet on your divine appearance day. All glories to Srila Prabhupada, all glories to your holiness. It is our sheer good fortune to celebrate your Divine Vyas festival this year at Ujjain. This is due to your kindness and mercy that we are allowed to take part in this glorious event. It is our humble request, Maharaj, as your divine appearance and His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj's divine appearance almost same time, and you have already agreed to come this memorial festival every year. It is a humble request to celebrate your Vyas Puja every year in Ujjain. And we will request to invite all your disciples and well-wishers to invite Ujjain in this festival. And if in this event, if there is shortcomings, please correct and rectify us so that we can improve next year. I am always very much enlivened by seeing your enthusiastic dancing and singing. It always reminds me of the dance of my devotees done for glorifying the Supreme Lord Krishna. Since the beginning of my spiritual life, I have been taking so much inspiration by seeing Your Holiness, sometimes in Mayapur and sometimes with His Holiness Bhakti Swami Guru Maharaj in other places. I got the chance to serve you so many times as a personal servant of Sri Guru Maharaj. Your heart is filled with love for Srila Prabhupada and Iskcon, and your indomitable efforts in preaching Krishna consciousness tirelessly all over the world to various communities is the display of the pure love and compassion. Lord Sri Krishna, Srimati Radharani, Lord Chaitanya, all previous acharyas, and Srila Prabhupada are all supremely compassionate on the fallen souls, and Your Holiness is carrying the same legacy of unlimited compassion for all living entities in the world. In your recent lectures, we got to know so many sweet pastimes with our Guru Maharaj and your austere life and dedication in New Vrindavan. We want to hear more and more about that. How a young boy in nowhere in New Vrindavan, how you can dedicate your life in such a, nothing is there. You said this is inmate, means prisoners.
willfully you have accepted prisoner's life there. So that means you are so eternal, associated with Srila Prabhupada, otherwise it is not possible. Your preaching in prisons all over the world is a living proof of your compassion. You have approached most fallen souls. It the most. Thank you so much for accepting all of us and being so kind to all of us on this auspicious day. Please bless me that I can become an insignificant servant and instrument in fulfilling the instructions and desires of all my superiors. Your humble servant, Bhakti Prem Swami. Thank you very much, Maharaj, for your heartfelt offering, and especially we are very thankful. We are very thankful to Maharaj for requesting Maharaj to come every year and celebrate his Vyas Puja at Ujjain only. And we are very hopeful Maharaj has accepted that request. Now we request Rivo. Request Her Grace Anand Vandan Mataji from Indore to please come and read out her offering. After that, His Grace Jagat Jivan Prabhu, Her Grace Anand Vandan Mataji and his husband, His Grace Jagdanand Prabhu have a relationship with Maharaj since last 20 plus years. When Maharaj was in Chicago as a resident sannyasi, they also used to live there. And His Grace Jagdanand Prabhu has requested Maharaj to please visit Indore. And Maharaj agreed that I will visit Indore also for few days. Indore devotees should be very happy with that news. So, and he's in Chicago, America now. So, Mataji has come from Indore and she will share her offering. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Our dear and most revered Candramauli Swami Maharaj, please accept my most humble. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. My husband and I have had the good fortune of your association since 2001 in Chicago, when you were the resident sannyasi there. For many years, we were fortunate to have your association, service, and guidance. You share a very loving relationship with my Guru Maharaj, His Holiness Srila Ramapad Swami Maharaj, and also with many of your God brothers. You set a very nice example for us, the next generation in Iskcon, to have loving relationships with each other. For all the years we were in Chicago, we received so much spiritual nourishment, personal care, and love from you, just as we received from our own spiritual master. And now, it's 2023, and after 22 years, life feels like a full circle. Here we are in your association again,
thanks to the very kind arrangement of His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj, and the Ujjain temple. In Srimad Bhagavatam 1.13.10, it says, Bhavad vidha bhagavatas tirtha bhuta swayam vibho tirthi kurvanti tirthani swantasthena gadabhritaha. My Lord, devotees like your good self are verily holy places personified. Because you carry the personality of Godhead within your heart, you turn all places into places of pilgrimage. Unquote. Living in Chicago always felt like Vaikuntha because we had your wonderful association. I remember 2 instances where I got to witness personally your amazing loving care and support to the devotees. I remember hearing many classes from you about the holy name and how to go deeper in one's chanting. Your attachment to the holy name of Krishna has always been very inspiring to me. I remember in one of your classes, I think it was about 2002 or 2003, you spoke about Anartha Nivritti and how the name purifies the conditioned soul. I had asked you a question. As a newcomer, I was very enthusiastic about bhakti, and yet I was feeling very challenged and limited with my own struggles. I asked you how I should structure my practical life so that I could chant more peacefully. You kindly advised me to take on only as much service and purification as I could handle so that my life remains balanced and I could chant in a more regulated and consistent fashion. Your instruction has always stayed with me the last 22 years and continued to guide me in many life choices that I've had to make in sadhana bhakti. Another instance I want to share was in 2006. I had written to my Guru Maharaj about a very close friend of mine who was earlier a devotee but was then contemplating on converting to Christianity. She was living in London at that time. I tried my best to convince her, but I could not help it. And then I had approached my spiritual master, Rompat Swami Guru Maharaj, about this difficult situation. And he asked me to take guidance from you. I remember I wrote to you, and you responded to me immediately. And after a few days, when I came to the temple, in spite of having so many engagements at the temple and in the presence of so many devotees, you spent one-on-one personal time with me, and you gave me so much guidance and so many recommendations about what I could do to convince this friend of mine to stay as a devotee. And I was amazed to see that in your full of papers that you had actually collected over the last few days, anticipating that I would come and ask you. You had collected so many materials on how to present Krishna consciousness to Christians. I felt so overwhelmed by your love because I wasn't really expecting that this was over and beyond what I had anticipated. And after receiving your guidance and all the materials from you, I actually conveyed that to my friend in London. And Guru Maharaj will be very happy to know she's now a devotee. She chants 16 rounds and she's connected to the London temple and she's attending Bhakti Vrikshas regularly. So I got to witness firsthand the potency and power of the well-wishings of a pure devotee of the Lord. So there are so many more such instances that I would love to share, but in the interest of time, I would pause here. But it's really wonderful, Guru Maharaj, to be in your association again. And I always pray to Srila Prabhupada and my spiritual master that I can continue to be a servant of the disciples of Srila Prabhupada, and always take your teachings on the holy name more into my heart. Thank you so much. Dhanyavad pranam. Haribo. Thank you very much, Mataji, for sharing your heartfelt offering. Now we request His Grace Jagat Jivan Prabhu, and after that, His Grace
Krishna Kishore Prabhu, then His Grace Brajendra Krishna Prabhu. Hare Krishna. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimati Candramauli Swami Yati Namane. Hare Krishna. We are very fortunate to have the association of Maharaj. Maharaj, I heard your glories a lot of times, especially in the lecture of Radhanath Swami Maharaj and his disciples, especially your struggle during your presence in New Vrindavan. You appeared in 1947 and just in age 24, you joined the mission of Prabhupada. And especially in the days of New Vrindavan, you have a very deep relationship. And there is a time in New Vrindavan, there were around more than 250 devotees. And just because of influence of time, there is only 2 devotees remaining so far. One is His Holiness Candramauli Swami Maharaj and other is His Holiness Radhanath Swami Maharaj. Acronym, and then Maharaj have many hundreds of the qualities, but I try to remember few of them. So from Candramauli, C means charming personalities. Maharaj's nature is very charming, very attractive. Humorous, S, humorous in the nature. And A for appreciation for even a small services. Even during Maharaj staying in Ujjain, I rendered few of the services, small services, and Maharaj appreciated. N means natural leader. D means completely dependence on the Guru and Krishna. And dancing expert. Everyone knows Maharaj is very expert in dancing. R, representative of Parampara. As we can see in today's lecture also, Maharaj is so much emphasizing. And A means austerities. We can see the pastimes. We can hear the pastimes. And Maharaj himself told in New Vrindavan how they are struggling even for prasadam. Months together they used to eat then khichdi only. There was a time, and Radhanath Maharaj was sharing, like sometime devotees used to get for the wick of that Aarti to apply the ghee on their chapati. So they consider themselves very fortunate who is getting that wick. So they are taking from Pujari and applying on the chapati. So this was the condition. There are too much austerities Maharaj performed. M means for melodious Kirtan. A means accepting whatever favorable and encouraging. Use means using everything for the service of Lord and Krishna, Prabhupada. And L, loving everyone. I, intelligent. S, simple-hearted and very sweet. W, well-wisher of all. Accommodative, magnanimous and inspiring. And Maharaj, as we see then different preachers are preaching, but preaching in the jail is really a very selfless service, because they people don't neither have money nor name nor fame. So it's very, otherwise general preaching, college preaching, corporate preaching, it is easy because we can get something in return. Even they cannot purchase books also. So they cannot sponsor anything for us for prasadam. So Maharaj did so much selfless services. And by taking inspiration from Maharaj, I also got the opportunity to preach in the jail. And 2 years I preached in Sagar Central Jail for 1,875 prisoners. And there we teach them Bhagavad Gita and a lot of prisoners' life reform. On the life of these prisoners, Maharaj wrote 2 important books. One is Holy Jail, that is published in 2015, and another is Forbidden Voices, that is also life and inspiration from the many prisoners whose life got changed by the teachings and mercy of Maharaj. And the Forbidden Voices, as an expert devotee, Maharaj wrote many poems also. Maharaj is an expert poet also. So there is one small poem I want to read by the permission of Maharaj on the Krishna consciousness. Maharaj wrote in that book, Krishna, dress me in a body of light. Let me dance in heaven to your soul delight. Krishna, please wash my sins away. Please dissolve my karma and
then bless my dharma. I have been waiting for so long. Krishna, don't make me wait. I am ready now. I am standing at the gate. Krishna, you are so near, and yet I miss you so much. I close my eyes and try to envision your touch. Krishna, please let me guide, lead me like Arjun, and stand by my side. Open the doorway to Krishna consciousness and allow me to roam, clarify my vision. So Maharaj wrote this poem, especially it is for us. Maharaj's vision is already clear, and Krishna is always in the side of Maharaj. So we need the blessings of Maharaj on this auspicious day. The level of surrender he showed towards the Prabhupada, we can do in the mission of Prabhupada and success of our life. We need the blessings of Maharaj. His Holiness Candramauli Swami Guru Maharaj ki, Srila Prabhupada ki. Rivol. Thank you very much, Jagat Jivan Prabhu. He mentioned that Maharaj appeared in 1947. One devotee was giving introduction of Maharaj, and he told that Maharaj appeared in the same year in which India became independent. So Maharaj said in reply, but I am teaching dependence. Dependence on Krishna. So, and Prabhu mentioned that preaching in jail is very causeless service. So as Narad Muni used to go to hell to deliver them, Maharaj is going to jail to deliver the fallen souls. Thank you, Maharaj. Now we request His Grace Krishna Kishore Prabhu to share his offering, then His Grace Rajendra Krishna Prabhu, then His Grace Vyasdev Prabhu. कृष्ण नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते चंद्रमौली स्वामी निति नामिने। हरे कृष्ण। मैं अभी हॉल की तरफ देख रहा था, बहुत सारे भक्त इंग्लिश नहीं समझते हैं, सो आई विल रीड माय ऑफरिंग इन हिंदी एंड हिज ग्रेस चित्तारी कृष्ण प्रभु विल ट्रांसलेट इन इंग्लिश टू गुरु महाराज। तो हमारा बड़ा सौभाग्य है कि गुरु महाराज का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है उज्जैन में। श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोला करते थे कि इस्कॉन एक बड़ा परिवार है जिसमें हम कभी भी अकेले नहीं हैं। हमारे पिता, हमारे चाचा, हमारे ताऊ, हमारे भाई बहन सब हमारा साथ देने के लिए हमेशा रहते हैं। तो इस तरह का जो सिद्धांत गुरु महाराज ने सिखाया है, हम प्राकृत रूप से प्रैक्टिकली वी आर एक्सपीरियंसिंग इन द शेल्टर ऑफ हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज। महाराज अभी 2-3 दिन पहले ही महाराज को कुछ सामान एक सुरक्षित स्थान पे रखना था, तो महाराज ने हमको बुलाया और बोले कि एक अच्छा सा स्थान चाहिए जहां हम सुरक्षित ये द्रव्य को रख सकें। तो हम महाराज को लेकर के गए, एक स्थान में हमने वो सामान रखा और बाहर निकल के हमने गुरु महाराज को बोला कि महाराज ये स्थान बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है। महाराज तुरंत पलट के बोले, देयर इज़ नो सेफ प्लेस इन द मटेरियल वर्ल्ड। ये भौतिक संसार में कोई भी सुरक्षित स्थान नहीं है, केवल गुरु के चरण छोड़कर, एक्सेप्ट द लोटस फीट ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर। तो हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु महाराज का संग हमको मिल रहा है। सर्वप्रथम 2012 में श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज ने जब यहाँ कीर्तन मेला का आयोजन किया था, उस समय श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज आए थे और उसी समय पर हमको उनकी सेवा का सौभाग्य मिला था। हमने उस समय देखा था कि पहली बार हमने देखा कि कोई सन्यासी श्रीला हरिदास ठाकुर की श्री विग्रह की अर्चना करते हैं। तो महाराज की पर्सनालिटी श्री हरिदास ठाकुर हैं। और इससे भी बड़ा हमको आश्चर्य हुआ जब हम भी कुछ ही महीनों पहले हम डीलैंड में गए थे। डीलैंड में हमने महाराज का ऑल्टर देखा, तो महाराज के ऑल्टर में श्रील हरिदास ठाकुर थे, श्रीला प्रभुपाद थे और एक बड़ा चित्र था श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का। तो ये भी हमारे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी कि एक गुरु भाई अपने गुरु भाई का चित्र ऑल्टर में रखते हैं और कितना सम्मान से उनको भोग अर्पित करते हैं। श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के साथ भी एक लीला का स्मरण आ रहा है
जहाँ गुरु महाराज एक समय पर कीर्तन गा रहे थे और श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज नृत्य कर रहे थे। लेकिन रात के समय गुरु महाराज अर्धरात्रि में बोलते हैं कि आप चेक कीजिए कि महाराज जागे हुए हैं कि नहीं। तो हमने चेक किया तो गुरु महाराज रेस्ट कर रहे थे। तो बाद में हमने जब गुरु महाराज को बताया तो चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज बोल रहे थे रात में तो मैं रेस्ट ही करूँगा ना, और क्या करेंगे। तो गुरु महाराज को बताया तो गुरु महाराज बोले एक्चुअली मैं सो नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मैंने श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज से कीर्तन लीड करने के लिए नहीं बोला। तो इस तरह आपस में उनका संबंध था। अगले दिन फिर गुरु महाराज ने महाराज से क्षमा भी मांगी। तो उस तरह बहुत ही पारस्परिक संबंध हैं। अभी डीलैंड में हमने जैसे ही गुरु महाराज को रिक्वेस्ट किया कि आप आइए तो गुरु महाराज तुरंत तैयार हो गए और उनकी उपस्थिति में काफ़ी बड़ा एक महोत्सव का आयोजन हुआ, जहाँ पर श्री श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज, श्री श्रीमद जयदूत स्वामी महाराज, बाकी भक्त भी आए और गुरु महाराज ने अपनी ऑफरिंग दी। काफ़ी बड़ा प्रोग्राम हुआ। लेकिन एक चीज़ हम लोग भूल गए, प्रोग्राम होने के बाद हमने मंदिर साफ़ नहीं किया। तो अगले दिन सभी भक्त चले गए थे और ब्रेकफास्ट के बाद गुरु महाराज हमको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आपने सबको सेवाएं दी महोत्सव में, मुझे कोई सेवा नहीं दी, तो मैं एक सेवा चाहता हूँ, आप मुझे वो सेवा दे दीजिए। बोलते हैं कि मैं मंदिर साफ़ करना चाहता हूँ, क्या आप मुझे अलाउ करेंगे। तो हम लोग बहुत शर्म से पानी पानी हो गए क्योंकि मंदिर काफ़ी गंदा था। तो महाराज स्वयं जा कर के अपने हाथ से पूरा मंदिर को गुरु महाराज ने खुद ने साफ़ किया। तो ये एक आदर्श उदाहरण गुरु महाराज ने हमको सिखाया। उसके बाद जब हम लोग वहाँ से जा रहे थे तो गुरु महाराज ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी फ़्लाइट है, कहाँ कनेक्शन है। पूरी डिटेल लेने के बाद गुरु महाराज बोलते हैं कि शुड आई अरेंज प्रसादम फॉर यू, क्या मैं आपके प्रसाद की व्यवस्था करूं अलग अलग स्थान में जहां हॉल्ट है। तो इस तरह का प्रेम श्री श्रीमद भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के अप्रकट होने के बाद पहली बार हमको प्राप्त हो रहा है गुरु महाराज के माध्यम से। उसके बाद पिछली जनवरी में गुरु महाराज उज्जैन आए थे, इसी जनवरी में, और काफ़ी भक्तों को उत्साह मिला गुरु महाराज के कीर्तन से, नृत्य से। सभी ब्रह्मचारी भक्त, गृहस्थ भक्त सभी लोग महाराज के साथ कीर्तन कर रहे थे। और एक रात में तो 10:30 बजे तक गुरु महाराज ने कीर्तन किया और फिर चेयर पे बैठ के 1 घंटा और जोक सुनाए। तो बहुत ही प्रेम से महाराज सबके साथ आदान प्रदान कर रहे थे। उसी बीच में हमको सौभाग्य मिला, गुरु महाराज को हमने घर पे बुलाया था प्रसाद के लिए। तो प्रसाद लेने के बाद जब गुरु महाराज जा रहे थे तो हमने ऐसे ही परिचय कराया कि हमारी माताजी हैं, ये सुबह 3 बजे उठती हैं और 3 बजे से उठ के जप करती हैं। तो ये परिचय देने का अभिप्राय था कि गुरु महाराज शायद उनको कृपा देंगे, लेकिन गुरु महाराज ने अपनी तरफ से झुक करके उनको दंडवत प्रणाम कर दिया। तो ये हमारे लिए एक और शौक था कि एक वैष्णवता क्या होती है, कि किस प्रकार से हमको वैष्णव का सम्मान करना चाहिए। लास्ट में मैं व्यक्तिगत रूप से गुरु महाराज को बहुत आभारी हूँ, बहुत ही कृतज्ञ हूँ। पिछले जनवरी में जब गुरु महाराज जा रहे थे जिस दिन, तो मंदिर से बाहर निकलते समय मैं थोड़ा दूर खड़ा था। गुरु महाराज ने अपनी तरफ से पास में बुलाया और हाथ रख के बोलते हैं कि बताइए आपके जीवन में क्या दिक्कत है। तो मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था उससे पहले गुरु महाराज को कि मेरे जीवन में कोई दिक्कत है कि नहीं, लेकिन गुरु महाराज खुद से बोले कि बताइए आपके जीवन में क्या दिक्कत है। तो मैंने गुरु महाराज को बोला, गुरु महाराज मेरे जीवन में कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं गुरु महाराज को बहुत मिस करता हूँ। तो गुरु महाराज ने उसी क्षण पर कुछ प्रैक्टिकल टिप्स दिए और उनके आदेश को तब से जब हम पालन कर रहे हैं काफ़ी भक्ति जीवन में उत्साह मिल रहा है। तो आज के दिन में हम गुरु महाराज के चरण में प्रार्थना करते हैं कि वो इसी प्रकार हमको अपने शरण में रखें, उनके आदेश का हम पालन कर सकें। जिस प्रकार श्री श्रीमद भक्ति प्रेम स्वामी महाराज ने अनुरोध किया, महाराज यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा रहें और उनकी व्यास पूजा मनाने का भी हमको अवसर दें। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की जय। Thank you very much. Krishna Kishore Prabhu has a lot of things to share, but time is limiting as he has been with Guru Maharaj and has experienced the love between Guru Maharaj and his god brothers. So now we request His Grace Rajendra Krishna Prabhu and then His Grace Vyasdev Prabhu.
Rivo. Namo Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Chandramauli Swami Niti Namane. Respected Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. We are so fortunate that we got the opportunity to celebrate your Vyas Puja at Iskcon Ujjian. This is the first time we are celebrating your Vyas Puja, but we pray at your lotus feet that we get more and more such opportunities every year. On this auspicious day for my own purification, I wish to offer some words of gratitude to your holiness. Meditating your glories and writing offering for an exalted Vaishnava Guru like your holiness itself is so purifying. Your holiness has spent more number of years as a sannyasi than what my age is. So I am just like a little kid trying to glorify your holiness. Previously, I was interested in seeing Guinness Book of World Records, but now I am more interested in seeing Iskcon World Records. Energetic spiritualists like your holiness has made so many spiritual records and set such nice standards for us to follow. Just by following your footsteps, one will achieve all perfection. Maharaj, you will be happy to know that I also did 3 prison programs at Sagar, Chhatarpur and Morena. These are 3 cities of Madhya Pradesh, and it was a different experience altogether. One good thing with the prisoners is they can never say that they don't have any time. The common excuse given by most of the people. Maharaj, I was reading your offering to His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj after Maharaj's divine departure from this world, and was able to sense that your Holiness has got such a thick bond with His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, and its fragrance increases the sweetness in our lives. Such spiritual relationships are the door to the spiritual world. Maharaj, anyone who knows you just cannot stop himself glorifying you about your kirtan and dance. At such an advanced stage, at such an advanced age, you dance so ecstatically, bringing joy to the heart of deities and devotees. You are such a wonderful representative of Srila Prabhupada. Thank you so much, Maharaj, for setting such a brilliant example for all of us to follow. By serving spiritually exalted personalities like your holiness, not only my spiritual master will be pleased, but the entire Guru Parampara will be pleased. I wish to seek your blessings that I may never do anything which displeases Srila Prabhupada and Guru Maharaj. Your servant, Ujjain Krishnadas. रिवो महाराज की इतनी कृपा है, सबको माला माल करते जा रहे हैं. So, thank you very much, Ujjain Krishna. After that, we request His Grace Premavatar Prabhu to please come and read out his offering. After that, Bhakta Anish Prabhu, please be ready. So Prabhuji mentioned a very nice point that in jail they cannot say that we don't have any time. So Maharaj is preaching in jail and making many wonderful devotees. And also Anamandan Mataji mentioned that Maharaj has wonderful quality of having very loving relationship with his God brothers. Not only God brothers, but here we are seeing Maharaj is giving personal time to each and every devotee. Even after class finishes, a devotee asks question, Vyasdev Prabhu is waiting when Maharaj will go for breakfast, but Maharaj is going on, and Maharaj is, this shows his love for all of us. Thank you, Maharaj. Hare Krishna. Dear Candramauli Swami Guru Maharaj, please accept my humble obeisances at the dust of your divine lotus feet.
All glories to your holiness and all glories to Srila Prabhupada. I feel deeply humbled to attempt to express anything about you. Whatever I will say will never be sufficient to glorify your holiness. It is a great fortune having your holiness amongst us, a divine arrangement of Srila Prabhupada, who has made the association of such exalted souls available to everyone, just like you. Srila Prabhupada appeared with all his associates to inundate the whole world with the holy name in this age of Kali. Maharaj, you have such a great taste for holy name and pastimes of the Lord that when you narrate all these things, it seems you get dissolved in it. It's just wonderful to see Maharaj singing and especially dancing in great ecstasy. I am personally very much indebted to you, dear Guru Maharaj, for mercifully being with us and giving your audience to all of us, allowing us to come near you, serve your holiness. Despite all the physical inconveniences and health, you are extending yourself so much just to give joy to all of us. It's your causeless mercy only that you are allowing us to celebrate this most blessed event in your presence for the benefit of all of us. The departure of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj seems like another arrangement to bring you all, his beloved God brothers, even closer to us. His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj has a very deep love and affection for his God brothers. And your being with us, allowing us to have your association, is a testament to that love. Your darshan is itself so mesmerizing that as soon we see you, it looks like always intoxicated with the nectar of the holy name and fame of the Lordships. Especially, I see your presence as an opportunity that His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj has created for us to come more closer to Him through you. Your dealings to us are most perfect, just like we may have very formal relationship with father, but with uncle it's very comfortable and relaxed. I never went closer to Guru Maharaj, but I feel so encouraged and inspired to come near you, serve you, and always keep seeing you, be with you. Just like Brahma Samhita states, Katha Ganam Natyam Gamanam Api. Your walking, talking, singing, everything is so Krishna conscious that it seems we should keep looking at you and be with you. Maharaj has a very special relationship with Ujjain. His Holiness Bhakti Prem Swami Maharaj asked Maharaj to stay here at Ujjain and his preaching. Maharaj immediately responded with, "It's my home only, land of Mahakal. My name is Candramauli, who wears moon on his forehead." With utmost humility, we earnestly request you not to leave us alone once again. We feel that we need more of your association and shelter more than ever, seeking for your blessings and shelter always so that we can become a good devotee and instrumental in the service of Srila Prabhupada. Your humble servant, Premavatar Das. Hare Krishna. Thank you, Premavatar Prabhu. As you mentioned, by blessings of Maharaj, we are coming closer to Guru Maharaj. Thank you for this wonderful point. And now we request His Grace Krishna Mukund Prabhu. And after that, Bhakta Gaurav Prabhu, please be ready. Their offering. We will continue this session till 1 p.m. कहने को सभी के पास ज़्यादा है, समय की मर्यादा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए at 1 p.m. we will have Pushpanjali ceremony. Yeah.
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो ऊपर से ऐसा आदेश आया है कि हिंदी में श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। तो महाराज का विशेष रूप से मेरे आध्यात्मिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस्कॉन में सर्वप्रथम अगर मैंने किसी वरिष्ठ भक्त या सन्यासी की सेवा करी तो वो थे श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज। तो ये 2014 की बात है, जब उज्जैन में कीर्तन मेला का आयोजन हुआ था। तो उस समय मैं, कृष्ण किशोर प्रभु, हम सब केवल एक दिन के लिए ही उज्जैन आए थे और चारू स्वामी गुरु महाराज ने हमको मंगल आरती के समय अपने कक्ष में बुलाया, ऑफिस में। तो मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा था कि श्रील गुरु महाराज केवल हमसे हालचाल पूछ के हमको विदा कर देंगे और क्या ही बात करेंगे। लेकिन श्रील गुरु महाराज हमसे कहते हैं कि मेरे दो बहुत ही प्रिय गुरु भ्राता उज्जैन आने वाले हैं कीर्तन मेला के लिए, श्री श्रीमद भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज और श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज। तो मुझे भी व्यक्तिगत रूप से लगा शायद गुरु महाराज खुशखबरी सुना रहे हैं कि दो प्रभुपाद के शिष्य आ रहे हैं। और एकदम से श्रील गुरु महाराज कहते हैं कि उस समय हमारी दीक्षा नहीं हुई थी। तो गुरु महाराज कहते हैं कृष्ण किशोर प्रभु को उस समय कि कार्तिक, तुम भक्ति भृंग गोविंद महाराज की सेवा कर सकते हो, तुम चंद्रमौली स्वामी महाराज की सेवा कर सकते हो। तो बहुत ही बड़ा झटका था हमारे लिए कि पूरे मंदिर में से श्रील गुरु महाराज को हम ही दो मिले बस सेवा करने के लिए। तो लेकिन यह अवसर गुरु की कृपा से मिल पाया। और जब सर्वप्रथम चंद्रमौली स्वामी महाराज गुरु महाराज क्वार्टर्स में पधारे तो श्री गुरु महाराज ने महाराज को परिचय भी दिया कि ये कार्तिकेय पुणे में पढ़ाई करता है और ये आपकी सेवा करेगा। तो उसके बाद श्री गुरु महाराज अपने कक्ष में चले जाते हैं और श्री चंद्रमौली स्वामी महाराज मुझसे कहते हैं कि तुम्हारा नाम कार्तिकेय है और मेरा नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली का मतलब शिव, तो रिश्ते से हम दोनों बाप बेटे हुए। और मैं भी उस समय समझ नहीं पा रहा था कि इसका रिएक्शन क्या देना है, कि ये खुश होने की स्थिति या मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन महाराज का स्वभाव ऐसा है कि वो किसी भी व्यक्ति को बहुत ही कंफर्टेबल महसूस कराते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि महाराज श्री हरिदास ठाकुर के विग्रह की आराधना करते हैं। तो महाराज ने मुझसे कहा कि हरिदास ठाकुर के लिए एक टेबल लेकर आइए, टेबल बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। और मैंने भी जब टेबल लेकर आया तो जैसे कि हम देसी जुगाड़ करते हैं, कपड़े से टेबल की सफाई कर दी और महाराज के सामने लाके रख दिया। महाराज टेबल रेडी, आप हरिदास ठाकुर को यहाँ पर रख सकते हैं। तो महाराज मुझसे कहते हैं ये साफ़ तो नहीं हुआ है, अब जितना हम कर सकते हैं तो उसके हिसाब से तो कर ही दिया था। फिर महाराज अपना स्प्रे निकालते हैं। अगर आप लोगों ने देखा, महाराज के पास एक स्प्रे हमेशा रहता है। तो महाराज ने पूरे टेबल पर वो स्प्रे छिड़का और फिर मुझसे टिश्यू पेपर मंगाया, टिश्यू पेपर लेके आओ, टिश्यू पेपर से अब इसको पोंछो। और जब मैंने पोंछा उसको तो उसमें इतनी गंदगी निकली। और वो टिश्यू पेपर महाराज देखते हैं, महाराज बोलते हैं ऐसे सफाई करते हैं, भारतीय होके तुम्हें साफ सफाई रखना नहीं आता। तो ये एक और मूर्तापूर्ण इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। और महाराज इतने कृपालु हैं कि विशेष रूप से अपनी कृपा देते रहते हैं। जब कीर्तन मेला का ही समय चल रहा था तो उस समय श्री श्रीमद भक्ति भृंग गोविंद स्वामी महाराज का कीर्तन चल रहा था। तो मुझे सीतानाथ प्रभु ने एक माला दी कि आप महाराज को पहनाइए। तो मैंने महाराज को माला पहनाई और जैसे ही महाराज क्योंकि कीर्तन में नृत्य कर रहे हैं
महाराज को मैंने माला पहनाई और दंडवत दी, क्योंकि पंचांग प्रणाम किया तो महाराज मेरी पीठ पर ही बैठ गए। अब महाराज मेरी पीठ पर हाथ मारते हैं कि आगे चलो, तो फिर वो महाराज को पीठ पर बिठाकर थोड़ा आगे चलना पड़ा मुझे। तो ये महाराज की विशेष कृपा थोड़ी प्राप्त हुई। और उसके बाद ये सब 3-4 दिन सेवा करने के बाद आखिरी दिन इतना मूर्खतापूर्ण काम किया था मैंने, क्योंकि चंद्रमौली स्वामी महाराज की उस समय नित्यानंद त्रयोदशी के दिन भागवतम क्लास थी, और महाराज उस समय एलोवेरा की कोई दवाई लिया करते थे, और महाराज क्लास की प्रिपरेशन कर रहे थे, और फिर भी मैं बार बार महाराज का दरवाज़ा खटखटाता रहा कि आपके दवा लेने का समय है, दवाई ले लीजिए। मुझे इतना, मेरा दिमाग भी नहीं चला कि क्लास के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे विघ्न नहीं डालना चाहिए उसमें। तो फाइनली जब क्लास का समय हुआ, महाराज गेट खोलकर बाहर निकलते हैं, और मैंने महाराज से पूछा, महाराज आपकी दवाई? महाराज कहते हैं तुम मुझसे बात मत करो बिल्कुल। अब मैंने सोचा मेरी भक्ति का सर्वनाश, अगर गुरु महाराज को पता पड़ गया तो इस्कॉन से ही दाखिला हट जाएगा मेरा। और महाराज फिर दूर चले जाते हैं। उस समय विमल कृष्ण प्रभु प्रेसिडेंट थे यहाँ पर। तो महाराज विमल कृष्ण प्रभु के पास जाके बोलते हैं कि जो लड़का तुमने सेवा करने के लिए मेरे पीछे लगाया है, ये एक जिन्न की तरह है, इसको अगर मैं काम ना दूं तो ये मुझे ही खा जाएगा, ये मुझे इतना परेशान करता है, इसको बोलो मुझसे दूर रहने के लिए, हमेशा सेवा सेवा मांगता रहता, मेरे पास सेवा ही नहीं देने के लिए। तो फिर मैं भी बड़ा उदास हो गया। तो विमल कृष्ण प्रभु ने मुझसे कहा कि आप शांत रहिए, ऐसी कृपा मिलती रहती है महत सेवा में। तो उसके बाद फिर महाराज का क्रोध थोड़ा शांत हुआ। फिर महाराज ने हमको, जब हम वापस जा रहे थे, मैं कृष्ण किशोर प्रभु, तो हमको नर्सिंग ऑयल गिफ्ट में दिया, और फिर कहते हैं कि जब आप पुणे पहुंचेंगे, पुणे में आपसे मिलते हैं। तो सबसे पहले महाराज को हमने, जब हम राधा गोपीनाथ मंदिर जाया करते थे चौपाटी में, वहीं पर देखा करते थे श्रीमद राधानाथ स्वामी महाराज के साथ। महाराज बहुत बार संडे फीस्ट भागवतम क्लास दिया करते थे, और वहाँ भी संडे फीस्ट में चौपाटी मंदिर में कीर्तन महाराज किया करते थे। तो महाराज का जीवन बहुत ही प्रेरणादायक है, क्योंकि महाराज ऐसी कंडीशंस में रहे हैं न्यू वृंदावन में, जो कि बहुत भक्तों ने बताया है। और एक बार महाराज को प्रश्न भी पूछा गया पुणे में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, कि आपने, महाराज से प्रश्न पूछा गया है कि इतनी कठिन परिस्थितियों में आपने भक्ति कर कैसे ली। मतलब हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि महाराज भी एक बार बताए हैं कि 20 साल तक महाराज ने दिन में केवल एक टाइम प्रसाद लिया है। तो ये अकल्पनीय है हम जैसे लोगों के लिए। और जब ये महाराज से प्रश्न पूछा गया तो महाराज कहते हैं इसमें कोई कठिनाई नहीं थी, हमें श्रील प्रभुपाद को संतुष्ट करना था, तो हम आसानी से उस समय के थ्रू निकल गए। तो आज श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज के व्यास पूजा के अवसर पर मैं उनके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि महाराज का जो मनोभाव है, नो कंप्लेंट नो डिमांड्स, हम भी हमारे गुरु महाराज की सेवा में उसका विकास कर सकें और हमारे गुरु महाराज की सेवा कर सकें जीवन पर्यंत, बिना कोई शिकायत करे और बिना कोई इच्छा रखे हुए। हरे कृष्णा। श्री श्रीमद चंद्रमौली स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्ण मुकुंद प्रभु। आपने जो प्रसंग बताए द वंडरफुल, और जो अंदाज बयां है आपका वो बहुत अच्छा है, तो उसके कारण भक्तों को आनंद प्राप्त हुआ। आपसे और भी हम श्रवण करेंगे अगले अवसरों पे। इसके बाद भक्त गौरव प्रभु इज ऑल्सो एस्पायरिंग डिसाइपल ऑफ महाराज, एंड आफ्टर दैट हिज ग्रेस रसराज कृष्ण प्रभु, प्लीज बी रेडी, एंड देन भक्त अनीश प्रभु। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
नमो ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते चंद्रमौली स्वामी इति नामिने। आदरणीय गुरु महाराज, मेरा प्रणाम निवेदन स्वीकार करें। जब मैं 2007 में यहाँ पर से सर्विस कर रहा था, 2009 में मैंने आपको पहली बार इस्कॉन की जीबीसी मीटिंग थी जो उज्जैन में थी, उसमें मैंने आपका दर्शन पहली बार किया। उस समय मुझे ऐसा लगा कि प्रभुपाद का जो कृपा है वो उनके सारे शिष्यों में किस तरह बटी हुई है, और उसमें से एक जो आपका डांस देखा, कीर्तन सुना, तो मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ। मुझे बहुत प्रेरणा मिली कि प्रभुपाद की कृपा की जो बौछार है वो आपके ऊपर किस तरह से है। उसके बाद 2010 में जब मैं फर्स्ट टाइम वृंदावन गया था, तो मैं आपका एक फ़ोटो अपने साथ रखता था अपने एक डायरी में, और मैंने सोचा था कि मैं वृंदावन जाऊंगा, वहाँ पर बहुत सारे सन्यासियों के अलग अलग डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, तो शायद मुझे चंद्रमौली महाराज आपका कोई शिष्य मिले जिससे मैं अपना गेट टुगेदर कर सकूं, बात कर सकूं कि किस तरीके से मुझसे उनसे मेल या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मैं उनसे मिल पाऊंगा। मैंने वृंदावन में बहुत सर्च करा था, खोजा कि कोई मिले शिष्य, पर आपका कोई डिसाइपल मुझे वृंदावन में नहीं मिला। फिर 2011 में मेरी सिस्टर है राधा प्यारी माता जी, उन्होंने किसी वैष्णव भक्त से, बॉम्बे में कोई हैं, उनके थ्रू एक ईमेल आपका मुझे दिलाया था। फिर मैंने फ़र्स्ट टाइम आपको 2011 में एक ईमेल लिखा था, उसके थ्रू फिर आपने मुझे 10 to 15 डेज़ में उसका रिप्लाई किया था रिगार्डिंग माय भक्ति पोजीशन एंड ऑल, यहाँ पे जो था। उसके बाद मेरा आपसे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट बनता रहा महाराज। उसके बाद से अभी तक, अभी मैं सर्विस में हूँ, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ, और चाहता हूँ कि भविष्य में अच्छे से सेवा कर सकूँ, कभी इस्कॉन से दूर न जाऊँ। और हमारे परम पूज्य भक्ति चारू महाराज का एक आदेश था, उनका मैंने एक कोटेशन पढ़ा था कि हमें कभी भी इस्कॉन नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इस्कॉन श्रील प्रभुपाद के चरण अरविंद हैं। तो मैं प्रभुपाद के चरण अरविंद में और इस्कॉन उज्जैन के भक्तों के चरण अरविंद में हर समय रहूं, यही मेरी आपसे गुजारिश है और सारे इस्कॉन भक्तों से गुजारिश है उज्जैन के। और मैं आप सबके लिए बहुत ही धन्यवाद, आपको सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। चंद्रमौली महाराज की जय। Hare Krishna. Thank you very much, Gaurav Prabhu. Now we have few more devotees to share their offering. We request His Grace Rasraj Krishna Prabhu to please come fast. After that, Her Grace Kalyani Radhika Mataji, and then His Grace Krishna Kirtan Prabhu. रसराज कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते Swami Chandramauli Swami Maharaj iti namine. Dearest Your Holiness Chandramauli Swami Maharaj, please accept my most humble obeisances at your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to Your Holiness. Srila Prabhupada has created a house in which the whole... Just 1 minute. हिंदी ट्रांसलेशन 108 FM पे चल रहा है। जो भक्त हिंदी में श्रवण करना चाहते हैं वो 108 FM पे सुन सकते हैं। Srila Prabhupada has created a house in which the whole world can live in. For those who join the family of Srila Prabhupada especially,
His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj helps us to realize that although we may have accepted a spiritual master in our life, we should also accept his God brothers as good as that spiritual master. Those God brothers also become our best well-wishing uncles, keeping us aligned to both our own Guru and to Srila Prabhupada. After the departure of His Holiness Bhakti Charu Swami Guru Maharaj, you shared your deep appreciation and glorification of him. You shared with us the wonderful and sweet brotherly relationship you had with him and how you deeply respected him. You then soothed my heart by sharing that you are there for his disciples if they need anything. Since then, you have been ever manifesting yourself in my life. I feel utmost gratitude in my heart for you entering into my life, Maharaj. You once spoke in Iskcon Ujjain with so much clarity what is Guru, who is Guru, how one should understand Guru and accept Guru. This made so many things very clear about Guru Tattva, the hardest Tattva to understand. The main point I understood is that Guru is one, and we also accept one Guru in the heart. For this I am most grateful. We also met a fair few times in England, and after one lecture you saw me and said, "He is my brahmachari friend." This is the real gift Srila Prabhupada has given us. He has given us his spiritual friendship, his love, his supreme care, and you are so wonderfully assimilating and distributing that same mood of love and trust. Yesterday also, I received an enormous amount of mercy from you as you allowed me to put on your socks and shoes. And as you rested your arm around my shoulder for many minutes, you spoke to me about the most interesting subject matters on world history and how Lord Chaitanya Mahaprabhu's plan is underlying everything. During this discussion, I saw something in your eyes. I saw Srila Prabhupada in your eyes. I saw you as I see Srila Prabhupada, and I saw Srila Prabhupada's voice as your voice. Maharaj, in the age of Kali, Lord Chaitanya has come dancing and singing, and you are the embodiment of that mood, embodying the verse, Raja Vidya Raja Guhyam Pavitram Idamuttamam Prataksha Swagamam Dharmam Susukam Kartam Avyam. You are always joyful, for you carry the spirit of complete ecstasy in dance and song. Even while you give lectures, your voice and emotion moves as you are singing only. In this age of Kali, a guru as yourself is most required. For everyone is born a Shudra, Kalo Shudra Sambhava. And so you understand that for all of us, we need much entertainment. And thus very compassionately, you remember countless stories and jokes that you can speak on all night. Each story is peppered with sharpness to cut one's attachment to the material world. You are one of the Lord's associates who has become completely submerged in loving ecstasy, and everywhere you go, you distribute the same divine love. You embody the mood of devotional service with your jolly and grave character. Dear Maharaj, you have not only become my uncle, but you are also a guru for me and a true well-wisher in my life. I pray to you, Guru Maharaj, that I can become affected by your ecstatic love for Lord Chaitanya Mahaprabhu. I can follow your mood and mission and come out of bodily consciousness and also dance my socks off, even when the body won't allow. Please bestow upon me just a drop of faith and dedication from the vast ocean of faith and dedication you have in Srila Prabhupada, for I am simply a new brahmachari trying to get my foot in the door of Krishna consciousness. Thank you, Maharaj, for everything. Please let me remain at your lotus feet and serve you and Srila Prabhupada's mission with all my energy. Please accept me as your eternally aspiring servant and student in Krishna consciousness, Rasaraj Krishna Das. Hare Krishna. Thank you, Rasaraj Krishna Prabhu. As Maharaj saw him, you may have noticed I told his name once again. So Maharaj asked me, Maharaj told me, from where this boy? I met him in London. So Maharaj remembers all the devotees. This is Maharaj's special mercy. And now we have 3 more offerings. Our Grace Kalyani Radhika Mataji.
and then His Grace Krishna Kirtan Prabhu. Please be ready with your offering. After that, His Grace Vyas Prabhu. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते चंद्रमौली स्वामी नामने। Dearest Maharaj, please accept my humble obeisances at the dust of your divine lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. By your mercy, on your glorious Vyas Puja day, I try my best to glorify you for my own purification with a simple poem. Ocean of qualities, with your mercy I try to glorify. O loving Father, forgive me for mistakes in my try. Krishna consciousness in presence you gave. Even to most fortunate, you mercifully save. Your everlasting enthusiasm and causeless love give us the insights of the spiritual world above. Vani relationship with the spiritual master, by your example you teach to make our relationship with him more beautiful and deep. So loving, humble, cute and simple, and make Guru Maharaj's memories in our hearts rekindle. Please come here again and again and drown us in your Kirtans rain. I wish that always in Prabhupada's service I stay, and this to you I always pray. Your daughter Kalyani Radhika Devidasi. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Dearest Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you. I am very grateful and humbled to get this opportunity to glorify you on this very auspicious day. The very first thing which comes to my mind when I hear your name is spiritually recharged Vakreshwar Pandit of Iskcon. My very first memory of your association, which I can recall, is in 2014, Iskcon Ujjian Kirtan Mela. When your holiness came and added a whole new ecstatic perspective to the Kirtans by your energetic dance, it seemed like the Kirtaniyas didn't want to stop Kirtan because everyone wanted to keep looking at your astonishing energetic dance. I was amazed at how people extremely young in this age were tired after dancing, but not once did we see you feeling tired at all. Because Maharaj, you have come from the spiritual world and you have been carrying the mood of ecstasy throughout. Sometimes I feel how amazing those days were when thousands of devotees like your holiness, spiritually recharged and energetic, would do Harinam Sankirtan, dance together. It would look like a pure reflection of Golok on this material world. You are truly Vakreshwar Pandit of our Iskcon world. Over the past few days, I have been fortunate to witness your taste for the holy name, your absorption while doing Kirtans. You get lost in the nectar of holy name while doing Kirtan. Even last night, we saw, if there wasn't any embankment of the time factor, you would have kept doing the ecstatic Kirtans. Maharaj, you have taken this instruction of Chaitanya Charitamrita to your life and soul. Nacho gao bhakta sange kara sankirtan.
Maharaj, you have been ecstatically engaging all the devotees in Sankirtan so amazingly that it feels void after finishing Kirtans with you. I pray that we keep getting to experience that ecstasy through you. During SPMF, when I heard that how much difficulties you had gone through during your initial days in spiritual life, it's just an inspiration that if a person is a serious seeker, no matter how many obstacles comes, he will surpass it. However, you had lived in New Vrindavan, served day long on those big boots, which sometimes even absorbed water and mud, living with minimum necessities of life, and all such extreme situations. This directly reflects how much dedication you had for Srila Prabhupada's movement. You just kept standing against all the obstacles with the sole objective to please Srila Prabhupada. Maharaj, please bless me so that I can develop that staunch dedication for the mission and serve with the same spirit. Maharaj, even after being one of the senior disciples of Srila Prabhupada, you treat every devotee, every Vaishnava with so much respect, love, and a friendly relation. For me, it's an ideal example of how devotees should treat their juniors. While having your association, it feels like having a dose of soul-filling nectar. Maharaj, your poetic art is also amazing, which I recently got to know a couple of days back, when you instantly made 3 poems back in your room. All these qualities of yours is just so inspiring that I personally look upon to develop one day to serve you and the devotees with more proficiency. Maharaj, the way you glorified Bhakti Charu Maharaj and your attachment to him, especially when you told the past time when you took his socks away, this itself shows how surrendered you were to Srila Prabhupada and his disciples. You have not only taught us by the mood of Trinadapi Sunichen, but also have shown it practically by your actions. I pray to you, Maharaj, that I may develop this mood, this servitude, and this strong desire to serve the Lord and his devotees the way you have been doing so many years. I pray for your mercy so that even if I deviate in my path of devotional service, may I keep being pulled by the love of devotees like you. May I sing and dance my way back to home, following your footsteps, and may I serve my spiritual master with the same love and dedication that you had for Srila Prabhupada. Your servant, Krishna Kirtan Das. Thank you, Krishna Kirtan Prabhu. As his name says, Prabhu ko Kirtan mein bada, as his name says, Krishna Kirtan, he loves Kirtan, and Maharaj is very happy to see him. He plays wonderful mridanga also in Kirtan. So, now another one of dear servant of Maharaj, His Grace Vyasdev Prabhu, we request him to share his offering. His Grace Vyasdev Prabhu is serving Maharaj since more than last 10 years. Because he is the in charge of our Ayurvedic clinic, and when Maharaj comes here to treat all of us, at that time Maharaj takes treatment and Vyasdev Prabhu serves Maharaj. So he has many pastimes, but Hare Krishna. Hare Krishna. I have been asked to share the offering in Hindi, and Chitari Krishna Prabhu will translate so that all the devotees who are majority here in Hindi. So I'll try to speak in Hindi, but probably it will be a little bit khichdi of Hindi and English. Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Candramauli Swami Maharaja iti namine. हरे कृष्णा. यद्यपि मैं इतना पूरी तरीके से सक्षम नहीं हूँ कि मैं महाराज की सेवा कर सकूँ, लेकिन किन्हीं कारणों से गुरु महाराज ने मेरे को जब क्लिनिक की सेवा में संलग्न किया और ये सेवा जब मुझे दी, तब मैंने इतना सोचा नहीं था कि इस तरीके से गुरु महाराज जो है मुझे कृपा कर रहे हैं कि उनके जितने भी गुरु भाई हैं या गुरु बहन हैं जो लोग क्लिनिक में आते हैं
और उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। जब पहली बार हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज आए और मैं देख रहा था कि उस समय पे भी मैं इतना योग्य नहीं था और ना ही मैं उतना योग्य आज हूँ, लेकिन महाराज मुझ पे कृपा करते हैं और इस तरीके से कृपा करते हुए ये सेवा करने का अवसर मुझे देते हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर मेरी गलतियाँ होती है और महाराज मुझे उसमें सुधारते हैं। हमने कई बार प्रभुपाद से, गुरु महाराज से और कई वैष्णवों से सुना कि जो महत अधिकारी होते हैं वो अपने आप को अपने स्तर से नीचे लाकर जो भी कनिष्ठ भक्त होते हैं उसको सेवा करने का अवसर देते हैं और उनका हाथ पकड़कर प्रभुपाद के चरणों तक लेके जाते हैं। तो ये मैंने हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज में देखा कि वो इतने उच्च स्तर पर भक्ति करने के बावजूद किस तरीके से अपने आप को एक जो भी छोटा से छोटा भक्त होता है उसके स्तर तक लेकर आते हैं। चाहे जैसे कोई छोटा बच्चा हो, अगर वो कोई भी चीज़ खेलने के लिए मांग रहा है, कुछ करने के लिए बोल रहा है, तो महाराज उस तरीके से कृपा करते हैं। कई भक्त लोग सामने से आते हैं, वो लोग चाहते हैं कि महाराज का आशीर्वाद मिले और महाराज हमेशा अपने दो हाथ फैलाए। जिस तरीके से जगन्नाथ जी अपने भक्तों को बुलाते हैं वैसे महाराज सभी भक्तों को कृपा करते हैं। जैसे अगर हम देखें कि महाराज अगर मंदिर जा रहे हैं या फिर अपने कमरे में वापस आ रहे हैं तो कई भक्त लोग बीच में मिलते हैं, महाराज को प्रणाम करते हैं, तो महाराज वहीं पे रुक जाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से वो भक्त प्रणाम कर रहा है और उठता है तो उसको भी हरे कृष्ण बोल कर ग्रीट कर कर फिर आगे बढ़ते हैं। फिर कई बार जब महाराज से मिलने के लिए भक्त लोग आते हैं तो महाराज उनको बोलते हैं कि आप चेयर पे बैठिए, लेकिन भक्त लोग सोचते हैं कि नहीं हम महाराज के सामने चेयर पे कैसे बैठेंगे, तो वो लोग नीचे बैठते हैं। तो महाराज फिर उनके लिए आसन ढूंढने के लिए जाते हैं कि कहाँ है आसन, वो लोग नीचे नहीं बैठेंगे फ्लोर पे। तो महाराज कोशिश करते हैं कि जो भी भक्त आए हैं उनको कितना अच्छी तरीके से टेक केयर करते हैं। मैं देख रहा था जब हिज होलीनेस भक्ति प्रेम स्वामी महाराज आए थे हिज होलीनेस चंद्रमौली महाराज के पास और महाराज रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम ये जो प्रोग्राम है किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और महाराज चंद्रमौली स्वामी महाराज यही बता रहे थे कि हाँ ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, मैं तो यहाँ पे सेवा करने के लिए आया हूँ, तो गुरु महाराज ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो जो भी सेवा मैं कर सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा। तो इससे हमें पता चलता है कि चंद्रमौली स्वामी महाराज का हमारे हिज होलीनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज के साथ किस तरीके का रिलेशन है, किस तरीके का संबंध है। मैंने अभी तक इस्कॉन में मेरे को ज़्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन जितना भी समय मैं सभी वरिष्ठ भक्तों की सेवा करते हुए देख रहा हूँ, मैंने कभी देखा नहीं कि कोई भी सन्यासी हो, कोई भी महाराज हो जो अपने गुरु भ्राता की जो छवि है वो अपने साथ हमेशा लेके ट्रैवल करते हैं। लेकिन हिज होलीनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज को ही मैंने देखा जो कि गुरु महाराज की छवि अपने साथ लेकर ट्रैवल करते हैं और हमेशा उनको अपने हृदय में लेकर चलते हैं। महाराज का मैंने 2-3 जगह एक्सपीरियंस ऐसा किया, क्योंकि मैं तो अभी जो भी उज्जैन में सेवा हो रही है कोई ना कोई डिवोटी संलग्न रहता है जो महाराज के लिए कुकिंग कर रहा है या महाराज के लिए कोई भी सर्विसेज ली होती है। इस बार श्रीदेवी माता जी और सुंदरानंद प्रभु भी कर रहे हैं, उन्होंने इसके पहले भी एक बार किया था। तो मैं देख रहा था महाराज जिनके साथ अपना एक संबंध स्थापित करते हैं, तो कई बार ऐसा मैंने फील किया कि जो डिवोटीज चाहते हैं और जो महाराज चाहते हैं वो कहीं ना कहीं मैच होता है, कि कहीं ना कहीं वो मिलता है।
जैसे अगर हम देखें हिज होलिनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज जो भाव से उज्जैन में आके रहते हैं और जिस तरीके से हम पे कृपा करते हैं, सभी भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं, संग देते हैं, शिक्षाएं देते हैं, तो उनका एक स्वभाव है कि वो एक सेवा दे रहे हैं। उसी तरीके से जो डिवोटीज़ है वो कुछ अपनी तरफ से सेवा देने की कोशिश करते हैं। तो भगवान इस यहाँ पे किस तरीके से दोनों को मिला रहे हैं ये मैंने नोटिस किया। एक बार कृष्ण किशोर प्रभु बता रहे थे कि जब डीलैंड में उन्होंने हिज होलिनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज को बताया कि महाराज आप उज्जैन आइए, वहाँ पर रुकिए और कोशिश करके हम लोग वहाँ पर आपकी व्यास पूजा सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो महाराज ने उनके साथ शेयर किया था कि हाँ मैं ज़रूर आऊँगा और आप मुझे सिर्फ एक कप केक दे देना जिसमें कैंडल लगा के मैं उसी को काट कर व्यास पूजा सेलिब्रेट कर लूँगा। तो मैं सोच रहा था, वो मैंने कई बार मनन भी किया उसके बारे में। और कल मैं श्रीदेवी माता जी के यहाँ गया तो वो मेरे को खुशी से बता रही थी कि वो महाराज के लिए कुछ ऑफरिंग बना रही है आज ऑफ़र करने के लिए। तो वो क्या हो सकता है, तो वो कपकेक्स बना रही थी। तो ये मैंने देखा कि किस तरीके से महाराज ने उनको बोला नहीं और ना मैंने उनको कुछ बोला, लेकिन जो महाराज ने बताया था वो चीज़ हो गई। इसी तरीके से एक बार श्रीदेवी माता जी मेरे को कई बार पूछते हैं कि क्या बनाएंगे महाराज के लिए, क्या बनाएंगे। तो एक बार डिनर के लिए उन्होंने सजेस्ट किया कि सूप अगर है तो क्या बनाना चाहिए, ब्रोकली का या पम्पकिन का, इस तरीके से। पम्पकिन ही उन्होंने बोला। फिर जब मैं महाराज के पास गया उनके कमरे में, महाराज से मैंने पूछा महाराज शाम को क्या लेंगे, सूप लेंगे? तो महाराज बोले हाँ पम्पकिन सूप अच्छा रहेगा। तो मैंने सोचा कि ये हो क्या रहा है, किस तरीके से हो रहा है। कई बार हमको लगता है कि कृष्ण भावनामृत किस तरीके से हमारे जीवन में अपना जगह लेती है, भगवान किस तरीके से भक्तों के बीच में आदान प्रदान करते हैं, ये हम कई बार नहीं समझ पाते। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिससे हमको लगता है कि ये ऐसा हो रहा है कि दोनों भक्तों के बीच में एक आदान प्रदान हो रहा है बिना बात किए भी। फिर मुझे एक इंसिडेंस ये याद है कि जब भी हिज होलिनेस भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज मंदिर में कीर्तन करते थे और हिज होलिनेस चंद्रमौली महाराज जब यहाँ पर रहते थे, उस समय पे जब कीर्तन होता था और महाराज जिस तरीके से नृत्य करते थे तो वो देख के ऐसा लगता था कि जनरली हम देखते हैं बाहर साधारणतः कि सब लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा नशा करके क्लब में जाके डांस और ये सब करते हैं, लेकिन महाराज को देख के ऐसा लग रहा था महाराज ने हरि नाम का ही नशा किया हुआ है। वो हमेशा इंटॉक्सिकेटेड लगते हैं हरि नाम से। तो वो एक फीलिंग आ रही थी महाराज को देखते हुए। और मैंने देखा कि महाराज जो है वो हरिदास ठाकुर, श्रील हरिदास ठाकुर जो है उनकी सेवा के प्रति बहुत ही ज़्यादा सीरियस रहते हैं कि उनको सुबह में क्या ऑफरिंग होनी चाहिए, दोपहर में किस तरीके से होनी चाहिए, शाम को किस तरीके से होनी चाहिए, उनकी जो प्लेट्स है वो किस तरीके से सफाई होनी चाहिए, कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है। महाराज एक एक चीज़ें जो है श्री हरिदास ठाकुर की सेवा के लिए डिटेलिंग से बताते थे कि इस तरीके से ये सेवा होनी चाहिए। फिर एक और क्वालिटी है महाराज की, जो है महाराज का ह्यूमर। महाराज जनरली जो भी हम देखते हैं इस्कॉन में, महाराज जनरली बहुत सीरियस लेवल पे कुछ भी चीज़ अगर देते हैं, अगर हमको शिक्षा है तो बहुत सीरियस होती है कि हमको उसको लेना रहता है। लेकिन हिज होलिनेस चंद्रमौली स्वामी महाराज जब भी कोई शिक्षा देते हैं वो एक ह्यूमर के साथ देते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कप केक के ऊपर वो क्रीम लगा के एकदम से परोसी हो, क्योंकि वो लेने में बहुत आसानी हो जाती है। ऐसा लगता नहीं है कि हम लोग को किसी भी शिक्षाओं को लेने में आसान होगा, और उससे ऐसा लगता है कि कृष्ण भावनामृत बहुत ही सरल है और ये चीज़ अगर हम अपने जीवन में लेंगे तो एकदम आसानी से इसको हम ले सकते हैं अपने जीवन में। ये एक चीज़ मैंने महाराज से सीखी। और महाराज को जब भी मैंने सर्व किया
तो महाराज कहीं ना कुछ जोक्स है, पोएम्स है, ये बताते हैं और वो शेयर करते हैं। जो भी भक्त आता है उनके साथ में उस तरीके से बात करते हैं जिस तरीके से मतलब पहले कभी उनसे मिले ही ना हो और पहले से ही उनको जानते हो। तो इससे जो भक्त होता है वो बहुत खुशी से सामने आता है, महाराज के पास अपना हृदय व्यक्त कर पाता है और महाराज से शिक्षाएं ले पाता है। मुझे एक इंस्टेंस याद आ रहा था जो हमारी हाल ही में श्रील प्रभुपाद मेमोरियल फेस्टिवल हुआ था उससे, जब दैवी शक्ति माता जी ने चंद्रमौली महाराज जी से पूछा कि आप जो आपकी प्रिजन प्रीचिंग है उसके विषय में कुछ बताइए। तो महाराज ने एक पॉइंट शेयर किया था कि जिस तरीके से वो प्रिजन प्रीचिंग में मतलब जेल में प्रीचिंग करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे एक कैदी था जो कि उसको सज़ा देने के बावजूद वो उस चीज़ को स्वीकार नहीं कर रहा था कि उसने कुछ अपराध किए हैं। लेकिन जब वो भक्तों के संग में आया, भगवत गीता पढ़ी उसने और उसने उस चीज़ को समझा कि क्या उसने गलत किया है और क्या सही है, तो उसने उस चीज़ को स्वीकार लिया और अपने जीवन में भक्ति को संलग्न करने लगा भगवत गीता को पढ़ के। तो वहाँ पे जेलर जो थे और जो उनको जो कैदी था उसको सज़ा मिली थी, फांसी की सज़ा, आखिरी में उसको डेथ सेंटेंस मिला था। तो जिस समय में प्रचार हुआ और जिस तरीके से उसने अपने जीवन में भगवत गीता को लिया और आखिरी में वो नाचते कूदते हुए सबको टाटा बाय बाय बोलते हुए जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ, अगला जन्म मैं कृष्ण भक्त के घर पे लूँगा और अगले जन्म में मैं कृष्ण भक्ति करूँगा। तो इससे समझ में आता है कि महाराज किस तरीके से जेल में जहाँ पर व्यक्ति सारे अपराध करके जाता है वहाँ जाकर उस व्यक्ति को किस तरीके से कृपा कर रहे हैं कि वो इतना क्लियर हो जाता है कि अगला जन्म उसका कृष्ण भक्ति में होगा और वो कृष्ण भक्ति करेगा। तो इसी तरीके से सभी भक्तों के ऊपर महाराज अपनी कहीं ना कहीं कृपा कर रहे हैं। मैं भी महाराज के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि मैं कहीं पे भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ सेवा में, मैं योग्य नहीं हूँ आपकी सेवा के लिए, लेकिन आप मुझे कृपा कीजिए कि मैं जिस तरीके से मेरे गुरु महाराज चाहते थे कि मैं सेवा कर सकूँ प्रभुपाद के इस मूवमेंट में, तो वो मैं अच्छे से कर सकूँ, आपकी शिक्षाएं लेकर कर सकूँ, गुरुदेव की शिक्षाएं लेकर कर सकूँ, वैसा आप मुझे आशीर्वाद कीजिए। हरे कृष्ण। Thank you very much. Now we have two last offerings. Bhakta Anish Prabhu and Bhakta Jivan Prabhu. Please come forward and read out your offering. Vyasdev Prabhu told that when Maharaj dances in Kirtan, it looks, sometimes some devotees ask, कौन कहता है कि भक्त लोग, who says that devotees don't drink or intoxicate when they see devotees dancing in Gaur Aarti, and when they especially see Maharaj, they can surely be convinced of that. So Maharaj is himself intoxicated and he makes all of us intoxicated in the nectar of holy name. ऐसा कहते हैं कि जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, रात को पी सुबह उतर जाएगी, हरिनाम की प्यालियाँ पी ले तो सारी जिंदगी संवर जाएगी। Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj, Janvat Pranam. I have a short offering, Maharaj. I mean, there are many feelings, but I could not express everything in words. So I cannot describe in words how grateful I am that I have been given this opportunity to serve you. So many places in our Shastras it has been stressed that out of millions and millions of people, there is only one pure devotee of the Lord. And to have the opportunity to serve such a devotee is practically incalculable. Your existence on this planet is a practical demonstration of dedication and loyalty to Srila Prabhupada.
you have given your life as an offering to Srila Prabhupada. It is because of pure souls like you that today millions of devotees all around the world are happily engaged in performing devotional service. It is so inspiring to see how you have maintained an amazing level of enthusiasm, humor, and agility even after expending years of vigorous service for the movement. Your dance is highly graceful, Maharaj. It is a treat for the eyes to see you dancing. Personally, I have seen, Maharaj, even when you climb the stairs, the way you climb the stairs, it seems like you are dancing. I get a glimpse of spiritual world when I see you performing kirtan, dance, etc. Somehow I am also getting the opportunity to see you interacting personally with devotees. All your actions are extremely charming, including your speech. When you speak, it is meant to give love and shelter to the devotees. Although I was new to you when I started serving you, but you immediately made me feel comfortable, like I knew you since many years. When I approach you, I feel like a son approaching his father. I remember, Maharaj, during Srila Prabhupada Memorial Festival, while I was trying to serve you, I fell sick, I was having fever, and that night when I was massaging your lotus feet, you were already asleep, but because you had compassion and you were thinking about me, you woke up and you gave me medicine so that my health can become better. That itself shows how much you care for devotees, Maharaj. Although I make so many mistakes, you are highly tolerant and you very mercifully guide me how to improve service attitude. I feel very secure and happy in your divine association. Please forgive me for the mistakes and offenses that I may have committed knowingly or unknowingly at your lotus feet. Please bless me, Maharaj, that I may become sincere in devotional service. Please bless that I may become sincere in chanting the holy name and serving Guru and Vaishnavas, aspiring to be your sincere servant, Bhakta Anish. Thank you, Anish Prabhu. After that, we will hear from Bhakta Jeevan Prabhu. Hare Krishna, dear Maharaj. Please accept my humble and respectful obeisances at dust of your lotus feet. It is my good fortune that I am constantly getting your association. Dear Maharaj, I remember first time I saw you in His Holiness Swami Maharaja Mayapur Kartik Yatra 2017 at Bhakti Vinod Thakur's Samadhi place. You were giving lecture. I was very much impressed by your kirtan there. Maharaj, you have many transcendental qualities as devotees were describing. I will try to glorify some of them which I witnessed by my material senses. Maharaj, your kirtans are world famous. The tune in which you sing is unique and very attractive to the heart of new people also. Yesterday, many new people were dancing in ecstasy and experiencing the Krishna consciousness in their life first time. All were welcoming Krishna in their heart in the form of holy name. When you sing kirtan, you become fully absorbed with other devotees. It's like releasing the sweetness of Krishna. It also gives me remembrance of Srila Prabhupada. Prabhupada also used to release reading his own books. Maharaj, when you dance, young devotees like me feel shy. Devotees just wait, when will you start dancing like dancing? But Maharaj, sometimes I feel fearful. The way you dance in such an advanced age may hurt your leg or body. May Lord Chaitanya always protect you while dancing. Maharaj, your classes are very simple, basic and to the point. Maharaj, your every action shows the simplicity. It's really surprising. How can you live so simply? Sometimes your actions are very innocent than child. Children are generally considered very innocent and simple, but any devotee can say you have really defeated the children
of this world in simplicity and innocence. Words emanating from your mouth are full of compassion and kindness to the whole world. In Srimad Bhagavatam it is said, Durlabho manaso deho dehinam shanabangura tatrapi durlabham manne vaikunta priyadarshanam. For the conditioned soul, the human body is most difficult to achieve, and it can be lost at any moment. But I think that even those who have achieved human life rarely gain the association of pure devotees who are dear to the Lord of Vaikuntha. Maharaj, Krishna resides in the heart of his pure devotee. Your heart is resident of Krishna. It is my good fortune and good fortune of the whole world that devotees like you, representative of Srila Prabhupada, are traveling extensively just to share the mercy of Lord Chaitanya. When I see disciples of Srila Prabhupada, now they are in their 80s and doing so many things, taking so much load of society, my eyes fill with tears. I am such an insignificant that I can't take any burden from their shoulder. Dear Maharaj, on this auspicious day, I beg at your lotus feet, let me use my free will always to please Vaishnavas, Srila Prabhupada and Krishna. Let me serve all the part and parcel of Krishna in whatever way I can serve them. Let my mind always be attached to Guru and Krishna. I never do any action which will bring ill name to Srila Prabhupada and Iskcon. It is my prayers to the lotus-eyed Lord. May He bestow good health to you and give whole world your divine association. His Holiness Candramauli Swami Maharaja ki jai. Hare Krishna. Thank you very much, Jivan Prabhu. So we can see that so many devotees want to speak because Maharaj's glories are unlimited. But only time is limited, and so we wish to hear from all the other devotees in future. So we pause this offering reading session here, and we are very thankful to all the devotees for participating in this session. Now Her Grace Radha Pyari Mataji is offering spiritual planner diary. She has opened a publishing house named Loco, and so she has made a spiritual planner diary, weekly planner, diary checklist, Gajendra Moksha kids books and Dashavatar cards. So she is offering all those to Maharaj as an humble offering from her side, and we pray that this publishing house goes on very nicely and many devotees come out of these efforts. Thank you. Thank you, Mataji. After that, now we will have Pushpanjali ceremony. We request devotees, please stand up and please come little forward. And सभी भक्तों के पास फूल आ गए? कहाँ फूल नहीं आए? हाथ उठाइए कृपया. तो माता जी इसकी तरफ कौन फूल वितरित कर रहे हैं? रंगीनाथा माता जी से वहाँ से फूल ले सकते हैं सभी भक्त लोग, और इधर संकर्षण निताई प्रभु से फूल सभी भक्त एकत्रित कर लें. अभी पुष्पांजलि होगी. प्रेम भक्ति प्रभु हैं, प्रेम भक्ति प्रभु, प्रेम भक्ति. आप मंत्र पढ़िए. Cordless. So we request His Grace Prem Bhakti Prabhu to recite Pushpanjali prayers. तो प्रभु जी मंत्र पढ़ेंगे, आप लोग पीछे पीछे दोहराइए. ध्यान दीजिए, 3 बार पुष्पांजलि होगी. जब प्रणाम मंत्र बोलेंगे महाराज का, उसके बाद 3 बार पुष्प अर्पित करने हैं, 3 बार प्रणाम मंत्र के बाद.
हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी को फूल मिला? यू गॉट फ्लावर्स? ओके। 3 टाइप फ्लावर एक साथ चढ़ा नहीं चढ़ा ना, 3 बार। हरे कृष्णा। प्लीज रिपीट आफ्टर मी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री विशाखान्वितांश्च नमों विष्णुपदाय नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
Ramo Ramo Hare Hare Namo Vishnu Padaya नमो विष्णु पदाय Krishna Prishtaya Bhutale कृष्ण पृष्ठाय भूतले Srimate Candramauli श्रीमते चंद्रमौली Swami Niti Namine स्वामी नीति नामिने Esha Pushpanjali एष पुष्पांजलि Samarpayami Srimad Candramauli Swami Guru Maharaj ki second time Namo Vishnu Padaya नमो विष्णु पदाय Krishna Prishtaya Bhutale कृष्ण पृष्ठाय भूतले Srimate Candramauli श्रीमते चंद्रमौली Swami Niti Namine स्वामी नीति नामिने Esha Pushpanjali एष पुष्पांजलि Samarpayami समर्पयामि Jai Sri Srimad Candramauli Swami Guru Maharaj ki जय Last time Namo Vishnu Padaya नमो विष्णु पदाय Krishna Prishtaya Bhutale कृष्ण पृष्ठा Srimate Candramauli श्रीमते चंद्रमौली Swami Niti Namine स्वामी नीति नामिने Esha Pushpanjali पुष्पांजलि Samarpayami Sri Srimad Candramauli Swami Guru Maharaj ki His Divine Grace Asi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Gaur Premanande हरे कृष्णा। अभी महाराज प्रभुपाद को भोग अर्पण करेंगे, तब तक हम कीर्तन करेंगे। भोग अर्पण के बाद महाराज कीर्तन करेंगे और हम क्या करेंगे? कीर्तन नहीं करेंगे। हरे कृष्ण। Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Prem se Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.
Krishna Krishna Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hello. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Hare Krishna. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare,
Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Goranga. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Goranga, 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 Goranga. Goranga, 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 Goranga. Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. Nitai Goranga, Nitai Goranga. Nitai, 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 Nitai Goranga. Goranga, 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 Goranga. Goranga, 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 Goranga. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana. Jaya Satinandana, Jaya Satinandana. Hey! Oh! Nitai Goranga, Jaya Nitai Goranga.
Goranga, Nitai Goranga. Goranga, 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 Goranga. Goranga, 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 Goranga. Nityananda, 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 Nityananda. Nityananda, 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 Nityananda. Nitai Goranga, Nitai Goranga. Nitai Goranga, 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 Goranga. Jai Sachinandan, Jai Sachinandan. Hey! Jai Sachinandan, Jai Sachinandan. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, God, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Jaya Prabhupada, Prabhupada. Prabhupada, Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Prabhupada. Jaya Bhakti Charu Bhakti Vaisnav Thakur, Vaisnav Thakur. Srila Bhakti Charu Vaisnav Thakur, Vaisnav Thakur, Vaisnav Thakur. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, God, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaur, Hari Bol. Jaya Radha Madna Moha, Radha Madna Moha, Shri Radhe. Jaya Radha Madna Moha, Radha Madna Moha, Shri Radhe. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaur, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Candramauli Swami, Jaya Guru Maharaj, Candramauli Swami, Jaya Guru Maharaj. Jaya Candramauli Swami, Jaya Guru Maharaj, Candramauli Swami, Jaya Guru Maharaj. Jaya, Jaya Gurudev, 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 Gurudev.
Jaya Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Jai, Jai Prabhupada, 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 Jai Prabhupada. Srila Prabhupada ki, Harinam Sankirtan ki, Nitai Gaur Premanande, Hari Hari. Vanchakalpa Tarubhischa, Kripa Sindhu Bevacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namaho Namaha, Gaur Bhakta Vrinda ki jai, Harinam Sankirtan ki jai. जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज आविर्भाव तिथि महोत्सव की श्रीमद चंद्रमौली स्वामी गुरु महाराज व्यास पूजा महोत्सव की जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक आचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन आचार्य बिंद की गुरु परंपरा आचार्य बिंद की अनंत कोटि गौर भक्त बिंद की सावेद गौर भक्त बिंद की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज All glories to Shri Guru and Gauranga. All glories to Srila Prabhupada. Hare Krishna. Abhi cake cutting. Maharaj, cake is waiting for you. Maharaj, cake is waiting for you. Yeah. Everybody can watch. Asman Patra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. हरे कृष्णा। आप लोग केक यह खाना चाहते किचन में? किचन में यह केक मिलेगा तो फूल प्रसाद नहीं मिलेगा। यदि फूल प्रसाद चाहते हैं तो केक किचन में मिलेगा। कौन सा चाहिए? किचन में, ठीक है। तो केवल महाराजा भी अकेला खाएंगे, आप लोग देखना केवल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare.
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram. O Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. O Jaya Gurudeva, 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 Jaya Gurudeva. Gurudeva, Jaya Gurudeva. O Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol.